अरे भाई तो बता ना यार तू कि मैं म्यूट हूँ यार, मैं वैसे ही बता बड़बड़ कर रहा हूँ। मंद लोग हो भाई, बताओ पहले बताओ कि माइक बंद है, दिख रहा है तुमको ये चालू है? व्हाट द फक भाई। मैं ऐसा बोल रहा था कि हम नई चीजें ट्राई कर रहे हैं, समझा ध्रुवेश? ध्रुव, समझा? ध्रुव, ध्रुव बेटा। रुद्र मोरे वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। ध्रुवेश का भी स्वागत है, मोक्षी का भी स्वागत है। अबे ये बता मोक्षी, ये साइन इन विद गूगल है कि साइन इन विद फेसबुक है? ये वाला फीचर बहुत कम लोग के पास है यार, जेन्युइन भाई, जेन्युइन भाई। ये वाला जो है ना कि मैं डायरेक्ट तुम लोगों के आत्मा के अंदर देखता हूँ ऐसा। फ्री फायर में नया क्या है, इससे अच्छा मारियो खेल ले बाई। न्यू में फ्री फायर लाइक रियली फ्री फायर तो क्या भाई? अरे देखो मैं तुमको एक बात बताऊंगा, अपने इंडियन ऑडियंस जो है ना उनको ये स्टोरी मोड गेम वगैरह नहीं रही, बीजीएमआई फ्री फायर यही उनको जमता है बस, तो यही तो जनता है फेसबुक से। अरे बट ये अभी फेसबुक मेरा ले नहीं रहा है ना, ये मेरा वही प्रीवियसली लॉग्ड इन वुड यू लाइक टू कंटिन्यू एज प्रद्युम्न वही बोल रहा है वो, मेरे को वो नहीं करने का है ना, कंटिन्यू एज प्रद्युम्न नहीं करने का है, तो फिर मैं कैंसिल कर रहा हूँ तो फिर वो हो ही नहीं रहा। ये देख, ये मेरा फेसबुक, इधर साइन इन विद फेसबुक क्लिक करा, फिर ये बोल रहा है प्रीवियसली लॉग्ड इन, मतलब जो अभी कल का अकाउंट है वो। फिर अभी इधर क्या, इधर चूज अ डिफरेंट अकाउंट का ऑप्शन किधर है? नहीं ये कहा है? यहाँ पे चूज अ डिफरेंट अकाउंट का ऑप्शन ही नहीं, अकाउंट रिकवरी। तो क्रोम पे जाने का, मेरा अकाउंट लॉगिन कर ले, कैंसिल दबा ना, कैंसिल पे दबा, ये देख कैंसिल पे दबा, ये देख कैंसिल। अभी फ्री फायर में खुद 9 साल से खेला हूँ, बट रियली फ्री फायर इज शिया गेम। देख अगर मेरे को फ्री फायर से स्पॉन्सरशिप मिल गया, अरे तो अकाउंट लॉग इन करना, सेटिंग मधून तो लॉग आउट कर, बड़ी कर रहा है ना बेबी, ये देखना, ये देखना, ये क्या है? मोर साइन इन विद गूगल, साइन इन विद साइन वीके आईडी, तो क्या है क्या मालूम नहीं, इधर देखना है, ये लॉग आउट ही तो है ना, फिर ये लॉग आउट पेज ही तो है, ये क्या है? लॉग इन पेज है ये, अलग क्या करूँ इधर? ध्रुवेश पगार आया कि नहीं आया? मैं जो पूछा वो बता, पगार आया कि नहीं आया? सुपर चढ़ भेज। टू के स्ट्रीम कर रहे हैं बाय द वे, अगर इंटरनेट होगा वाईफाई होगा तो यू कैन वॉच 2K स्ट्रीम। ये ऐसा है जिसमें सिर्फ मेरा फेस दिखता है, बट ये वाला जो एस्पेक्ट है दिस इज गुड एस्पेक्ट। ये वाला तो बहुत प्यारा है, ये वाला तो रूम ही दिख रहा है पूरा, थोड़ा डेकोरेशन की चीज़ें ला, ये यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह करूँगा। मार्च में आएगा पगार मेरे भाई। मेरे को तो सुपर चैट चाहिए था यार, 400-500 रुपये का। ठीक है, फ्री फायर खेल रहा तो बच्चों जैसा बातें करेगा, गेमर है तू, बच्चों जैसी बात मत कर। क्रोम पे जाके मेरा अकाउंट लॉगिन कर, ये देख क्रोम पे गया, ये फेसबुक है, तो ये वाला जो मेरा अकाउंट है उसको क्या करूँ? इसको क्या लॉग आउट करूँ? नहीं, इसको लॉग आउट क्यों करने का है? ऐड अकाउंट का ऑप्शन नहीं है क्या इधर? ऐड अकाउंट का ऑप्शन नहीं है? और आने के बाद में खुद कुछ नहीं रखने वाला, वो नहीं चाहिए भाई। हाय पूकी, आज फिर से सस्ती मस्ती। ये क्या करूं भाई, बंद कर दूं क्या फ्री फायर की स्ट्रीम? मत नहीं खेलो क्या? बंद कर दूं क्या दोस्तों फ्री फायर?
दोस्तों बंद कर दूं क्या फ्री फायर? जेन्युइन क्वेश्चन भाई, बंद कर? मन नहीं खेलोगे? नहीं खेलोगे? तुम बोलो भाई अभी क्या है? क्या है भाई, बोलो भाई, तुम लोग बोलो भाई अभी। आज स्मार्ट टीवी में बीच बगी रेसिंग खेलते। अरे अरे यार, हाँ भाई बंद कर दे फ्री फायर। अरे अरे डिफेंडर की ऐड क्यों आती है मुझे? मुझे डिफेंडर की ऐड आती है भाई, ये इसकी ऐड आती रहती है। अरे वो बहुत आती रहती है ये चीज़ की ऐड। ले लो क्या एक दोस्तों? क्लासी चीजें खेलो, हॉलो नाइट खेलो। ये देखो मैं तुमको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है? रुक जा एक मिनट, अपन फ्री फायर को साइड को रखते, एकदम साइड को रख देते, ठीक है? इसको म्यूट कर दिया मैं। अरे यार मेरे को ये चीजें देखने की नहीं यार। यहाँ पे अगर हम जाएंगे, वो कैटेगरी किधर गई? इधर एक गेमिंग कैटेगरी, हाँ ये गेमिंग में गए। तो ये सब गेमिंग का है, ठीक है? तो GTA को वॉचिंग है 68,000, डोटा 2 62, उमागिरी आई डोंट नो व्हाट द फक इज दिस, उमीगारी यो व्हाट? தமிழ்ல ட்ரைலர் பக்கம் நான் இங்கிலீஷ் ட்ரைலர் பார்த்தேன் அப்புறமேட்டு பார்த்து பிறகு கமெண்ட் பண்ணிட்டோம் घंटा चालू है इनका, ठीक है ठीक है। मैं तुमको चीज़ें दिखाता हूँ ज़रा कि हाउ डज थिंग्स वर्क। देखते रहो, इससे अच्छा BGMI खेल लेता। ये देखो, फिर ये मोबाइल एजेंट्स को चालू है 49K वॉचिंग, फ्री फायर को 50K वॉचिंग चालू है, वर्ल्ड वाइड वॉचिंग, ठीक है? वर्ल्ड वाइड वॉचिंग। BGMI को 43,000, रोब्लॉक्स 37, आर्क रेडर 36, ये अच्छा गेम है बट महंगा ही है। वैलो 26K, पबजी मोबाइल, ओके ये वर्ल्ड वाइड है, ये इंडिया का है सिर्फ। पबजी मोबाइल इज़ 20,000, पोकेमॉन लेजेंड्स इज़ 18। और ये यही है ट्रेंडिंग गेम्स, इससे साइड को ट्रेंडिंग गेम ही नहीं है। पूकी मल्टी स्ट्रीम वाला किया, अरे आज पूरा दिन बाहर था बट मैं सीखता हूँ, मैंने कर लिया है वो, ये नोट करा है वो। द थिंग इज कि यहाँ पे क्लैश ऑफ क्लैंस भी नहीं है, यहाँ पे GTA तो रहेगा जब तक 6 नहीं आएगा। पबजी भी सी खेलते, पबजी भी सी खेलने के लिए पबजी भी सी डाउनलोड करना पड़ेगा। 8-bit हेड फ्लिकर, भाई को तो मैं ही दे दूंगा। आपका पूरा पेमेंट वो कैलो भी कर दिया था, मैंने भी कर दिया था, एक बार चेक करके सरजू बता भाई ड्राइविंग स्कूल उसके लिए उस दिन सामान नहीं मिला। सोल सिटी, ये मतलब लाइक ये लोग खेलते ही नहीं है, ठीक है चलो। अरे यार अंदर जा भाई, बंद कर दो क्या फ्री फायर भाई? तुम लोग बोलोगे तो बंद कर, तो बंद कर दो भाई। गेमिंग वापस जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ। ये गेम से ट्रेंडिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी ट्विच पे जाते, ठीक है? ट्विच पे तो कुछ भी चलता है, मेरे को वही पसंद नहीं। ट्विच पे जाते, पबजी टू फ्री फायर है ना। देखो वैलो का भी वॉच पार्टी वगैरह चालू है। ये देखो वैलोरेंट 82,000, क्योंकि अभी ये ई स्पोर्ट्स चालू है तो उसका CS 77। बट हम यहाँ पे स्ट्रीम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हम जब यहाँ पे स्ट्रीम करने को लेंगे तब हम यहाँ की चीज़ें देखेंगे। ये देखो यहाँ पे तो 1 लाख लोग देख रहे GTA को, वैसा समझ रहे क्या तुम? आई नो ये प्लेटफॉर्म अलग है। ये देखो ये क्या ऐसी चीज़ है, ये देखो why is, ये देखो why is this like this भाई? oh my god, oh my god, what the fuck is this? At this point this is not even a stream भाई। अरे बंद कर बैगा, क्या कर रहे भाई? पर भाई फ्री फायर डिनर हो गया भैया? नहीं भाई 3 दिन कुछ खाने नहीं वाला हूँ।
3 दिन कुछ नहीं खाने वाला. That is adult stream. अरे बच्ची, यहाँ पे देखो क्या विषय. मैं मेरा कैमरा कितना दिखा रहा हूँ, ये खुद को कितना दिखा रही है देखो. ये गेम प्ले कितना दिखा रही है देखो, और ये खुद को कितना दिखा रही है देखो. ये खुद को कितना दिखा रही है और ये गेम को कितना दिखा रही है. ये अलग चलता है मालूम क्या. ये ट्विच है ना ये. अरे यार बहनचोद भाई वापस कैसे आ गया ये. अरे बंद कर. हाँ ये ट्विच ये इनके ही लॉजिक से चलते हैं मालूम क्या. ये पत्थर बांधा है इधर और क्या. अरे नहीं 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 नहीं, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटरनेट का प्रॉब्लम है शायद, या फिर ट्विच का प्रॉब्लम होगा. तो क्या करूं भाई. BGMI आइको 15R इसको तो मस्त वॉचिंग है. पैट्रॉन सुनना, लेफ्ट राइट होके कुछ नहीं होगा. अरे नहीं, अरे भाई ये कंट्रोल्स मेरे नहीं है, लेफ्ट राइट गलती से हो रहा हूँ. क्या करूं फिर, बंद कर दूं क्या. ड्रॉइड तू भी ले ले कुछ भी भाई. ट्विच पर आप भी ऐसे हॉट टब स्ट्रीम करो. तो भाई बंद कर देता हूँ भाई. टाटा सियरा एसयूवी माइलेज क्रेटा राइवल, क्या बात कर रहे हो. हेलो एंड वेलकम बैक टू गाड़ीवाड़ी.com. दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट गौरव यादव, लेकर आया हूं टाटा मोटर्स की ऑल न्यू सियरा. क्योंकि वो पहले वो और में भी वैसे रहने वाली है, तो सेफ्टी के लिए जरूरी है. 622 लीटर का यहाँ पर आपको बड़ा बूट स्पेस. अरे यार टर्बो पे चल रहा है क्या एसी. एक्स्ट्रा स्पेस दिया है जो आप पीछे रख सकते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक टेलगेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग मिली है. बीजीएमआई के लिए फ्री फायर से तो बेटर है. के साथ साथ तो टैंक हमने यहाँ पे फुल करवा लिया है गाड़ी का. आपको मैं ओडो और दिखा देता हूँ कितना है इसका ओडो. तो ओडो है गाड़ी का यहाँ पर 795 किलोमीटर. ट्रिप ए को हमने 0 कर लिया है, और यहाँ से मतलब यार फिर वापस वो गेम्स पे क्यों जाए फिर. ऐसा मैं बोल रहा हूँ माइलेज टेस्ट के लिए अपन ने अगर चीजें ट्राई ही नहीं करी गाड़ी तो उधर ही रह जाएंगे ना. ए भाई मच्छर भाई. अरे यार पकड़ा था छूट गया. अरे मेरे को बीजीएमआई को भी क्यों वॉचिंग आया है अपनी भारत के अंदर पहली मिड साइज एसयूवी टाटा सियरा के रूप में. अब ये डीजल है क्या. सेगमेंट की शुरुआत हुई थी 13 साल पहले जब रेनो ने डस्टर को भारत में लॉन्च किया. फिर मारुति सुजुकी ने एस क्रॉस, hyundai ने क्रेटा, ग्रैंड विटारा, कुशाक, टाइगोन. मैं भी इसको ड्राइव कर रहा हूँ 152D हाईवे के ऊपर. जो ये किस लाइक में आ गए आप, लाइन में आ गया हाईवे है. हर बार इतने लाइक गेम्स में फ्री फायर ही क्यों. और अभी मैं गाड़ी को चला रहा हूँ प्ले होलो नाइट मोड एक्टिवेट कर लेता हूँ यहाँ से, और स्पोर्ट्स मोड में चलाते हैं इसको. हंड्रेड 9.5 सेकंड के आसपास में 0 to 100 की स्पीड पकड़ गई है. 120 आदित्य सोनू ने, आदित्य मिश्रा चले जा रही है आराम से. मेरे को तो लगता है ये महीना भर अपन ने खेलना चाहिए. 160 के आसपास ये जाकर मंथ तो खेलना चाहिए. टेल्स ऑफ डूम खेल, मजा आया ही तुझे डरता देखने में. मैं एक बात बताऊं क्या, मेरे पास एपिक गेम्स दिखा. स्ट्रेच चाहिए गाड़ी को थोड़ा सा टॉप स्पीड टच करने के लिए, बट वो भी लाइक वैसे मैंने आज अपने इंस्टा पर भी पोस्ट किया है. 192 ये स्क्रीन पे दिखाता हूँ मतलब कैसा. 195 की स्पीड हम टच कर आए हैं.
और ब्रेकिंग की बात करें तो इस स्पीड में कैसा इतनी कमाल की ब्रेकिंग आपको मिड साइज सेगमेंट के अंदर किसी और गाड़ी के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। और ब्रेकिंग ही नहीं, केबिन इंसुलेशन लाजवाब है। आमतौर पर इस 152D के ऊपर ना विंड ब्लास्ट काफी तेज सुनाई देता है। यहाँ पर ए पिलर के अंदर से 152D व्हाट इज दैट? आपको कोई भी आवाज शोर शराबा, आप हाई स्पीड में ड्राइव कर रहे होंगे ना तब भी आपको सुनाई नहीं देने वाला। ये जो RVMs हैं इनके अंदर से जरूर थोड़ी बहुत आवाज जो विंड की आती है वो जरूर आपको केबिन में सुनाई देगी, बट ए पिलर से कोई विंड नॉइस नहीं है। इंजन की आवाज ना हॉगवर्ट्स लेगेसी चालू करेगा, काफी स्मूथ गाइस। हॉगवर्ट्स लेगेसी चालू करें है ये। गियर शिफ्टिंग तो पता तक नहीं चलती और पैडल शिफ्टर से आप यूज करेंगे ना तो आप एंजॉय करने वाले हैं इसकी ड्राइव को। अभी सेकंड हॉगवर्ट्स लेगेसी चालू करेगा, इतना स्मूथली गियर्स यहाँ पर चेंज हो रहे हैं ना गाड़ी के। स्ट्रीम का कुछ और फोर्टनाइट खेल सिटी मोड इतना स्मूथली आपको लगेगा आप कोई कोरियन या जापानीज गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। इस लेवल की रिफाइनमेंट टाटा मोटर ने सियरा के इस न्यू इंजन के साथ में दी है जो सबको पसंद आने वाली है। एक तो आपको 80 से नीचे की स्पीड में आपको ये 6 गियर में थंबनेल देखकर गांड बढ़ गई दिलों में। ये पैडल शिफ्टर से देखो। अरे यार ये क्यों ऐसा बोल रहे हो तुम? GTA 5 करो। अरे भाई यार ये देख, अरे चालू है फ्री फायर, क्या है? गो वायरल। हाँ वायरल ही तो जाने का है। ये देख, ये देख, ये देख चालू है फ्री फायर। कौन बोला फ्री फायर नहीं चालू? मैं तो तुमको अलग अलग गेम भी दिखा रहा हूँ। ओह माय गॉड, नो 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 करो ना जनाब। बाप रे दोस्तों, अरे यार ये देखो आर्क सर्वाइवर वो डिलीट कर दिया। डूम, डेस्टिनी 2, टूम राइडर के सारे पार्ट्स है। अरे फॉल आउट पड़ा है, फॉल आउट खेलो ना। फॉल आउट पड़ा है, कहाँ पड़ा है फॉल आउट? अरे यार ये गेम बोला ना ट्रेंडिंग नहीं है। नहीं जा सकते, आपको ये हमेशा रखेगा वो 1700 RPM वाले जोन के अंदर। हाँ 80 से ऊपर जाएंगे तब हो सकता है कि आपको 6 गियर यहाँ पर ये गाड़ी अपने आप चली जाए। तो इतना स्मूथ इंजन सेटअप लेकर आई है टाटा मोटर्स सियरा के अंदर। भाई थंबनेल पे डाल जेजे के और फ्री फायर में कुछ व्यूज आ सकते हैं। उस जैसी ही आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस एंड पावर मिलने वाली है। और दूसरा केबिन एक्सपीरियंस में इजाफा किया है इसके इंटीरियर ने। कुछ व्यूज 3 स्क्रीन्स आपको मिल जाती हैं। बढ़िया ये जो लेआउट है ना। तुम लोग मेरे को एक गेम की लिस्ट बताओ कुछ अलग है। पुश स्टार्ट बटन ऊपर की साइड है, टेरेन मोड्स मिले हैं यहाँ पर, स्टीयरिंग हो सकता है कुछ गेम की लिस्ट बताओ है। और सोने पे सुहागा किया है साउंड सिस्टम ने यार। डोल्बी एटमॉस 12 स्पीकर, यहाँ पे डोल्बी का एक शो होगा। आप जब भी जाए ना किसी भी डीलरशिप पर ये गाड़ी देखने, चारों डोर को बंद करके उनको बोलना है कि मुझे एक बार ये डोल्बी एटमॉस का शो ये सुनना है यार, देखना है, एक्सपीरियंस करना है। तो तब आपको पता लगेगा कि कितनी बेहतरीन आवाज ट्रेंड बनाओ भाई। अभी तो अच्छी गेम स्ट्रीम नहीं है। उसके अलावा काफी सारे ऐसे फीचर्स भी आए हैं जो स्टैंडर्ड रखे हैं। बटन, LED हेडलाइट्स, DRLs, LED टेल लाइट्स, कनेक्टेड टेल लाइट्स, ये सब स्टैंडर्ड रखे हैं। और छोड़ के के साथ में उनको स्टैंडर्ड रखा है। 17 इंच के व्हील्स आपको बेस माइनक्राफ्ट नॉट इंटरेस्टिंग। माइनक्राफ्ट में दिखा है ना तुमको, ये देखो स्टैंडर्ड आपको मिलेंगे टाटा सियरा के अंदर। पीछे AC वेंट्स आपको स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग बेस मॉडल के अंदर। यहाँ पे जो वाइजर्स है ना ये भी स्टैंडर्ड है, एक्सटेंडेबल है, ये आप एक्सटेंड कर सकते हैं। करना भाई। तो फीचर्स में यहाँ पे कोई कटौती नहीं की है। और जो कनेक्टेड ये देखो यहाँ पे माइनक्राफ्ट है भी नहीं दोस्तों, लाइक लिटरली यहाँ पे माइनक्राफ्ट नहीं। माइनक्राफ्ट लाइव डालो, गेम्स खेल सकते हैं आप। अपना कंट्रोलर यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने हेडफोन आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। छोड़ तू कोई गेम एक महीना लगातार खेल, अगर 100 सब्सक्राइबर बढ़ गए तो कंटिन्यू साउंड सुनना है। क्लैश ऑफ क्लैंस का वैसा हुआ था, तो मतलब एक हफ्ते के अंदर 90 सब्सक्राइबर्स बढ़ गए थे, बट वो सारी गिव अवे वाली पब्लिक थी। सी कोई स्टोरी गेम करो स्ट्रीम एंड उसकी वीडियो बनाओ। स्क्रीन है वो चलती गाड़ी के अंदर। देखो माइनक्राफ्ट लाइव डाला, थोड़ा सा मेरे को भी दिखाई दे रहा है, डार्क हो सकती थी। एटलीस्ट ऐसी आजकल स्क्रीन गार्ड आते हैं ये भाई माइनक्राफ्ट क्या हाल है। फ्रंट से देखेंगे तो ही दिखेगा वो यहाँ पर लगाया है टाटा मोटर को। और बात करें ड्राइविंग डायनामिक्स की, ड्राइविंग ये माइनक्राफ्ट क्या हाल फक भाई। तो स्टीयरिंग फीडबैक आपको पसंद आने वाला है। अच्छा है स्टीयरिंग फीडबैक।
एडास को आपको बंद करके रखना होगा, नहीं तो वो लेन से बाहर जाने के लिए वापस अंदर ले आता है। अरे भाई तू ये तभी आप सियरा का एक्सपीरियंस रिव्यू कर बंद पाएंगे। कर, एडास मैं भी काफ़ी irritated बेहतरीन हूँ। है, उसके बाद हम बाद में करेंगे। अच्छा, सस्पेंशन अच्छे हुए हैं, देखा वो? FDD आ गया। FDD सस्पेंशन महिंद्रा की स्कॉर्पियो N XUV 700 3XO जैसी गाड़ियों के अंदर फील किए होंगे, वही FDD अब आपको यहाँ पर टाटा की सेरा के अंदर भी मिलने वाले हैं। तो राइड अभी काफ़ी बेहतर हुई है। पबजी मोबाइल सीट्स की इंडिया साइज में बड़ी चालू है क्या? ये कंफर्ट वर्ल्ड वाइड अच्छा चालू है ना? और यहाँ पर इलेक्ट्रिक ये बहुत डिफिकल्ट गेम है यार। ये ना, ये गोली मारने के जो गेम है ना, इनको गोली मारो भाई। ये गोली मारने के गेम को गोली मारो। साथ साथ काफी सारी ऐसे हाईटेक फीचर्स आए ना जो आपको मतलब मजा दिला देंगे यार। इस ये segment गोली में मारने के काफी गेम ऐसे को features गोली हैं जो मारो। कभी नहीं आए थे। सेगमेंट की पहली गाड़ी है 3 स्क्रीन के साथ में, सेगमेंट की पहली गाड़ी है इतनी बड़ी सनरूफ के साथ में, काफी आगे निकल गई है ये गाड़ी। डू यू नो वेनम टेक? हाँ ये देखना, इधर है ना, इधर किधर गया वेनम टेक? करा है मैंने सब्सक्राइब। अरे वो लाइव स्ट्रीम थोड़ी कर रहा है, बात तो सही है। अब हम वापस जा रहे हैं चंडीगढ़। 370 किलोमीटर हम गाड़ी को चला चुके हैं। माइलेज आ रही है MID के अंदर तकरीबन 15.6 के आसपास की। और एक और कमाल का फीचर है नेविगेशन। स्टोरी गेम्स खेल भाई। बिल्ड मिलेगा आपको गाड़ी के अंदर, जो आप अपने स्पीडो कंसोल के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से आप नेविगेशन, ये अपना हॉगवर्ट्स लेगेसी स्टोरी मोड ही है ना? तो ऐसे ऐसे कहाँ गया? सारे कमाल के फीचर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। कहाँ गया? Storage space हाँ। दुनिया भर के दी है। खेले हॉगवर्ट्स लेगेसी, खेलेगा अभी? हॉलो नाइट, फॉलआउट, सिल्क सॉन्ग, टूम रेडर, अंडरटेल, हॉगवर्ट्स लेगेसी, वेनम टेक ने एक्सयूवी पे कुछ तो क्रेजी डाला, उसकी फूट गई एक्सयूवी पूरी। जिस रोड के ऊपर आप ड्राइव कर रहे हैं उसको ये टोटल लॉस भी नहीं मिला, देख ली वीडियो मैंने। वो अपने आप उड़ाकर आपको यहाँ पर साइडर भी नाइस आइडिया। साइडर क्या गेम का नाम है क्या? टाटा की सेरा के अंदर क्या लगता है दोस्तों, हॉगवर्ट्स लेगेसी चालू करेगा फिर? डीएक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बटन प्रेस कीजिए, क्रूज सेट बाय कीजिए बाय। और गाड़ी को बिना आप किसी थकावट के चलाते रहिए। कितना ही लंबा आप गाड़ी को लेकर जाएं, आपको मजा आने वाला है इस गाड़ी को चलाकर। डिजाइन लाजवाब है। साइड में जो रबर सील्स होती है ना, ये हिडन रखी है, अंदर की तरफ इंटीग्रेट की है इसके doors के अंदर, तो बाहर से देखने में काफी प्रीमियम वाली फील आती है। इनफैक्ट बोनट भी ना इसका ऐसा है जो आपने लग्जरी या प्रीमियम कार्स के अंदर ही देखा है। ए पिलर बोनट के अंदर नीचे की तरफ इंटीग्रेट हो रहा है, बाहर से पूरा एक कंप्लीट डिजाइन है जो पूरी लाइन है ना आगे से लेकर पीछे तक ट्रैवल करती है। और बोनट की तरह ही बूट भी ना बिल्कुल इंटीग्रेट हो जाता है इसके क्वार्टर। हॉगवर्ट्स लेगेसी खेल मैं वो भी देख लूंगा, पर एफएफ नहीं। जो लग्जरी कार्स के अंदर आता है ना, बिल्कुल क्या हेट करते हो भाई तुम लोग फ्री फायर को। स्ट्रक्चर जो हाई एंड लग्जरी कार्स हैं जैगवार लैंड रोवर की, उससे कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड हैं ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पर टाटा सियरा स्टोरेज कितनी है देखना पड़ेगा। 11,50,000 रुपए की कीमत वाली 300 GB स्टोरेज है। साढ़ा साढ़ा फीचर्स या स्पेस में प्रीमियम नहीं है। विशाल क्या बात कर रहा है? एक्चुअल में प्रीमियमनेस आपको फील होगी जब इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे, लंबी ड्राइव के ऊपर लेकर जाएंगे, हाई स्पीड में ड्राइव करेंगे, ब्रेक सप्लाई करेंगे, हर एक जगह आपको कॉन्फिडेंस फील होने वाला है। और अगर एफएफ स्ट्रीम करनी है तो ब्राजील जावा स्पोर्ट्स क्रेजी है। क्या बात कर रहा है? कमाल के हैं। स्टीयरिंग फीडबैक भी आपको पसंद आने ये वाला नहीं है। मालूम जैसे था। आप लूज सैंड के ऊपर कहीं जब खराब भैंस रास्ते तभी के तो ऊपर तुम लो लोगों ने स्पीड में तो ड्राइव करेंगे, स्टीयरिंग एक हाई दूसरे लगा साइड हो दी। जाता है। बिल्कुल आपको यहाँ पर एफर्टलेस फील होने वाला है। और जैसे आप स्पीड इंक्रीज करेंगे, अभी 180 के आसपास की स्पीड में जब गाड़ी को ड्राइव कर रहा था ना, थंबनेल वगैरह स्टीयरिंग इतना चेंज टाइट करना हो गया था कि पड़ेगा। अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ रहा था आप। तो यहाँ पर टाटा मोटर ने काफ़ी मेहनत की है और सबसे बड़ा फ़ैन मैं हुआ हूँ इस गाड़ी का, तो वो हुआ हूँ एक तो इसकी गियर शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ है, दूसरा केबिन इंसुलेशन काफ़ी लाजवाब है, तीसरा राइड क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है और सीटिंग कंफर्ट भी लाजवाब है। मुझे अभी तक कोई भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ है। 500 किलोमीटर में गाड़ी को ड्राइव कर चुका हूँ। पूरी बड़ी वाली साइज़ की सीट दी है जो मैंने पहले भी हाईलाइट किया बाकी टाटा की गाड़ियों की वीडियो के अंदर, चाहे वो नेक्सॉन ईवी की बात हो या सफारी का भी मैंने एक वीडियो किया था। सीट्स की साइज़ थोड़ी छोटी थी, बट यहाँ पर बढ़िया आपको कंफर्ट मिलने वाला है और मज़ा आएगा चलाकर। मेरे पीसी में 2 GB क्रोम ही भी एक टैब में 6 फीट 1 चौड़ा एक टैब में की हाइट वाला पैसेंजर। सच में अंडरटेल ट्राई करो, उसकी स्टोरी कहाँ पे है अंडरटेल? लेगरूम मिल जाता है मिड साइज सेगमेंट की होते हुए 622 लीटर का बूट स्पेस ओवर करने के बावजूद आपको रियर सीट पे काफ़ी बढ़िया स्पेस ये गाड़ी ओवर करती है। हेडरूम ठीक है, लेगरूम ठीक है, पीछे आपको एक सनसेट मिल जाता है, आर्मरेस्ट आपको पीछे मिल जाती है और अगर आप मिडल रो के ऊपर बैठेंगे तो वहाँ पर भी आपको बढ़िया हेडरूम मिल जाता है। और जो रियर हेडरेस्ट है वो 3 मिलते हैं। चाइला तो पेड़ गेम्स मत गाड़ी ऐसी होगी जिसमें मिडल रो के ऊपर भी आदमी काफ़ी कंफर्टेबली
ट्रैवल कर सकता है। गाड़ी की विड्थ, गाड़ी की हाइट, गाड़ी का व्हील बेस, गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस सब सेगमेंट की सबसे ज़्यादा है। बूट स्पेस के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, बूट स्पेस तो लगभग 190 लीटर बड़ा मिलता है इस गाड़ी के अंदर इसके सेकंड क्लोजेस्ट राइवल से। भाई वहाँ पे LED टू व्हील नहीं हेडलाइट्स है इस गाड़ी के इतना, अंदर और इतने यहाँ ज़्यादा पर कम टूर्नामेंट्स स्पीड होते हैं। में हाँ ये कुछ तो ब्राज़ील जो जाना इनकी पड़ेगा। वो ऐसी पापा रहती है। सीतो। अभी ये हाई बीम है, ये मैं लो बीम कर देता हूँ और जैसे मैं स्पीड इंक्रीज करूँगा यहाँ पर, जैसे मैं 80-90 के आसपास की स्पीड में जाऊँगा तो कंपनी का ये कहना है कि इसकी जो बीम है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हॉगवर्ट्स लेगेसी चालू करूँ, अब बीबीएस का कंटेंट कॉपी मारते हैं। ये देखिए, ये हाई बीम उसने तो यूट्यूब वीडियो डालना बंद कर दिया ना। फैलाव काफ़ी बढ़िया है, व्यू काफ़ी बढ़िया है, उसने तो visibility यूट्यूब वीडियो काफ़ी डालना ही अच्छी बंद कर दिया ना। है। ये लो बीम, ये हाई बीम, ये अभी 100 की स्पीड में मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ और वहाँ पर कुछ ऐसा मिल रहा है मुझे व्यू। इन हेडलाइट्स अगर मैं बंद कर दूँ बिल्कुल गायब। इसके मिलियन में व्यूज आते तो कैसी थे लगी, पहले। कैसा लगा थ्रो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वापस अभी वैसे बीबीएस फियर्स और फैंटम की वीडियो डाली है। ट्रिप में पूरा होने वाला है ये और क्रेजी समय आ लेवल गया पे है गेम टैंक खेलता फुल है। करवाने का और फिर आपको बताएंगे फुल टैंक टू फुल टैंक कैसी माइलेज दी है। एक मैं फुल कह टैंक में रहा था 700 अभी। किलोमीटर के आसपास गाड़ी चल चुकी है। मैं देखते हो तुम लोग। और ओवरऑल अगर आप मेरा एक एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, वर्डिक्ट जानना चाहेंगे तो मैं बोल सकता हूँ कि टाटा की ये वन ऑफ द बेस्ट कार है जो इंडिया में आज तक लॉन्च हुई हो। जो मुझे सबसे बड़ी एक कमी मिली है और एक ही कमी मिली है सबसे बड़ी, वो इस सीट का मेमोरी फंक्शन है ढंग से काम नहीं कर रहा था कभी। लाइक सीट सेट अपने आप ही हो रही थी। अब वो ड्राइविंग प्रोफाइल शायद मुझे यहाँ से चेंज करना होगा, या जिसने भी पहले अपनी ड्राइविंग प्रोफाइल सेट की है उसके हिसाब से वो सेट हो रही थी। कुछ तो इशू आ रहा था मुझे, उसके अलावा मुझे मैं इस थर्ड गाड़ी के अंदर एपिसोड कोई पे ही कमी, फियर्स ऑफ सारा फैंटम की इंफोटेनमेंट गेम विंफोटेनमेंट क्विजी सब गेम है। बढ़िया से काम कर रहा है। काफ़ी बार ऐसा होता था पहले कि अच्छा। ड्राइव में ही आपको इंफोटेनमेंट में लैग है या सनरूफ में लैग Someone है, sent बट me a यहाँ पर suspicious टाटा सेरा package. की इस मीडिया ड्राइव में मुझे कोई भी इशू फील नहीं हुआ। अभी मेरे पास जो अब गेम्स है वो बता। लगातार आरडीआर मैंने चालू इसको कर। हाईवे के ऊपर ड्राइव आरडीआर किया, मेरे को है ना। लगातार मैंने इसको हाई स्पीड में ड्राइव किया और 190-95 तक की स्पीड में भी मैंने आरडीआर इस चालू गाड़ी करूँ को क्या? ड्राइव किया। मुझे काफ़ी पसंद आई। ये बंदा स्टीयरिंग अच्छा फीडबैक, गेम्स राइड खेलता है, क्वालिटी, कोई इंडियन खराब गेमर रास्ते अच्छी के गेम्स ऊपर नहीं ये जो खेलता है FDD आया एक्सेप्ट ना, हिम। उसके बाद ऐसा लगता है 2-3 सेगमेंट अबव की गाड़ी को आप ड्राइव कर रहे हैं। मिड साइज ऐसी भी सेगमेंट वाली फील नहीं है इस बात तो गाड़ी सही के है। अंदर। ना वो स्पेस में है, ना वो फीचर्स में है, ना वो लुक्स में है, ना वो ड्राइविंग कंफर्ट में है। रियर सीट का ड्राइविंग कंफर्ट 50-80 अपने सेगमेंट का सबसे बेस्ट ये गाड़ी ऑफर करती है। फ्रंट सीट का भी वन ऑफ द बेस्ट आपको ड्राइविंग कंफर्ट मिलने वाला है और स्टीयरिंग फीडबैक वगैरह तो लाजवाब है। यहाँ पर बॉडी रोल वगैरह भी काफ़ी कंट्रोल्ड है इस गाड़ी के अंदर। माइलेज भी मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी आ रही है यहाँ पर, जो मुझे MID के अंदर दिख रही है एक पेट्रोल टर्बो। हॉगवर्ट्स लेगेसी चालू करूँ क्या बताओ? मुझे थोड़े दिन पहले एक सब 4 मीटर SUV के फॉलआउट खेल रहा, आपके पास है स्टोरी गेम है दी थी, तो आप पुराने समझ सकते है हैं कि पेट्रोल टर्बो इतनी बड़ी गाड़ी से अगर मैं ऐसा गेम ढूंढ रहा हूँ कि उस पे वीडियो भी बनाऊँ, समझे? बहुत बेहतरीन रहने वाली है। अब लेकर चलते हैं इसको, फुल टैंक करवाते हैं, फिर आपको बताते हैं आरडीआर के माइलेज क्या निकल कर आई टाटा की इस सेरा। अरे हाँ, बाय द वे मैंने वो बैटरीज डाली थी कंट्रोलर के लिए, लाई थी अंदर ही रही। अरे नहीं, इसमें ही होगी ना। काजो 704.9 किलोमीटर हमने गाड़ी को ड्राइव किया है इस माइलेज टेस्ट के लिए। MID के अंदर जो माइलेज आ रही है वो आ रही है 15.6 किलोमीटर पर मैं तो बोल रहा वो क्रोम पे मैं इंटरनेट वाला गेम खेल। कैसी माइलेज
हाँ तो स्टोरी गेम्स की वीडियो बना, एपिसोड में बता दे और डालता रहे, थोड़ा बहुत एडिट कर। स्टोरी गेम्स की वीडियो बना, एपिसोड में बांट दे और डालता रहे, थोड़ा बहुत एडिट कर। तो लाइव स्ट्रीम पे क्या करूँ, लाइव स्ट्रीम पे क्या करूँ? लाइव स्ट्रीम पे ही खेलूँ ना। मेरे को ऐसा ऐसा मैं स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए वो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, वो इतना नहीं इन्वेस्ट कर सकते, बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर वो लाइफ में। पूरा दिन यूट्यूब में ही चले जाएगा, बहुत बाकी बहुत काम है रे। तो स्टोरी गेम्स की इवन वुल्फस्टाइन हिटलर है उसमें बीसी मज़ा आ जाएगा, वो वीडियो भी सेक्सी बन जाएगी। अरे तुम लोग मेरे को ऐसे गेम्स बताओ जो बाकी के यूट्यूबर्स भी कभी ना कभी खेले। ऐसा मत बोलो कि कोई खेला ही नहीं है डायरेक्ट। एक गाना सुनाओ कि मैं, हाँ सुना एक गाना सुना। चलो कम ऑन विशाल, लेट्स गो। मतलब स्ट्रीम पे खेल, उसमें से ही एपिसोड बना के डालते रहे। तो तुम लोग तो देखोगे ही नहीं, अगर तुम लोग सब स्ट्रीम पे ही देख लोगे तो। चलो ठीक है, तुम लोगों ने नहीं देखा है, चलो ठीक है, वो भी कर सकते हैं। तो अभी गेम डिसाइड करो। कंट्रोलर में बैटरीज डाल रहा हूँ, ड्यूरासेल, नॉट स्पॉन्सर्ड है। इसमें तो पहले से ही 2 बैटरीज है, बट ये डिस्चार्ज है ना शायद। गोजिरा प्रदू माझा प्रेम का ते सोहम है, कौन है तू? यस लाइव पर खेल लो एंड उसे एडिट करके डालो। यस चालू हो गया। मैसिव अपग्रेड करा आज, शिलाजीत डाल ले। ना वुल्फस्टाइन इज एक्चुअली गुड एंड स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। आप ट्रेंड का भी मत सोचो, अभी आप क्वालिटी कंटेंट उठाओ। क्या बात कर रहा है? ट्रेंड का मत सोचो। कैसा है ड्रॉइड? मी मस्त है एकदम टकड़क। टाटा की सिएरा पेट्रोल टर्बो वेरिएंट ने भैया टैंक फुल कर। अरे गांडू अजीब वीडियो देख लिया, पेट्रोल टर्बो वेरिएंट की क्यों देख रहा हूँ? डीजल देखने का रहता। कुछ तो आया है इधर, एक मिनट है, इधर ऑप्शन आया है मेंबर्स लाइव स्ट्रीम। हाँ ओके नहीं कुछ और ही है इधर। हाँ यही है, मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम। मेरे को इरिटेट हो रहा है, टाटा सिएरा कर रिव्यू बंद कर। ड्रॉइड जब एल्डन रिंग खेलता था तब मैं देखता, तू उससे आज वो फ्री फायर खेल रहा। तुम लोग को क्या बोलने का मतलब भाई, मैं डिग्रेड हो रहा हूँ ऐसा? डाउनग्रेड डिग्रेड डाउनग्रेड डीजेनरेट, जो बोलना है बोल लो। देखो दांत कितने सफेद है। डाउनफॉल नहीं हुआ है दोस्तों, कौन डाउनफॉल कैसे होता है? ऐसे 2000 सब्सक्राइबर थे और 500 हो गए, उसको डाउनफॉल कहते थे? गेम्स में डाउनफॉल हो गया ऐसा कह सकते तुम लोग। देखो क्लैश ऑफ क्लैंस जब खेलता था तब लाइक काफी बंदे आते थे। मैं तुमको क्या पूछ रहा हूँ बार बार? हॉगवर्ट्स लेगेसी चालू करे क्या? हाँ या ना बताओ, हॉगवर्ट्स लेगेसी चालू करे क्या कल से? आज कुछ तो अलग करना पड़ेगा, मतलब आज डाउनलोड में ही जाएगा ऐसा। हॉगवर्ट्स लेगेसी चालू करे या वेयर विंड्स मीट ये चालू करे? बेंचो 100 GB का तो गेम है ये, 92 GB का है। हॉगवर्ट्स लेगेसी वेयर विंड्स मीट, मतलब मेरे जो तुम लोगों ने ये देखे ना, ये देखो ये यहाँ पे बताओ, यहाँ पे देख के बताओ। ये डेथ स्ट्रैंडिंग भी है, ये फॉल आउट वगैरह करते बाद में। आर्क सर्वाइवल तो मल्टीप्लेयर है,
टूम रेडर बोलना, टूम रेडर वो अभी क्या, टूम रेडर मत बोलो, मतलब लाइक पैलेडिन्स वगैरह नहीं, ये डार्क वगैरह तो भाई खेला था, देख देख 2 स्ट्रीम कर दिया, मेरे को डर लग गया, फिर मैंने रख दी। हैप्पी गेम, कैलिस्टो प्रोटोकॉल, सिविलाइजेशन 6, स्टाइक्स, जेनशिन, ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या होगा जिससे भाई स्टोरी गेम खेलो एंड अच्छी गेम खेलो भाई, इवन डेथ स्टैंडिंग भी खेल सकते हो, उसकी भी स्टोरी अच्छी है। हाँ यस यस आई नो आई नो। रुक जाओ, अपन है ना ज़रा सा गूगलिंग बिगलिंग करते, ठीक है। हाउ मच टाइम टू कंप्लीट हॉगवर्ट्स लेगेसी? 30 to 40 hours, 80 hours to finish with significant side content, 100%. How much time to complete Death Stranding? क्या? अबे डेथ स्ट्रैंडिंग भूसड़ी के STRANDING, अबे डेप्थ नहीं डेथ। भाई इतनी गेम से आप फ्री फायर कैसे खेल रहे हो यार? मेरे को लगा यार मेन स्टोरी 30 to 40 आवर्स, 60 आवर्स। क्या वो तो बोलो, डेथ स्टैंडिंग, हॉगवर्ट्स लेगेसी की और क्या है मेरे पास? प्लेग टेल का तो इनोसेंस है, प्लेग टेल रिक्यूम भी एक गेम है, बट उसको खरीदना पड़ेगा, और मेरा इस पे प्रोग्रेस लॉस्ट हो गया था। टूम रेडर के तो 3 पार्ट है, तो ये 3 पार्ट का अपना, या फिर वो ह्यूमन बिकम डेट्रॉइट, बंदर क्या जानने अदरक का स्वाद। हाँ वैसे ठीक है। हाउ मच टाइम टू कंप्लीट ह्यूमन बिकम डेट्रॉइट? 10 से 15 घंटे। ह्यूमन बिकम डेट्रॉइट करे, ह्यूमन बिकम डेट्रॉइट करे, ये छोटा लग रहा है मुझे, इससे स्टार्ट करते। व्हाट डू यू थिंक गाइस? यार ये फ्री था वे एपिक गेम्स पे, मैंने लिया नहीं बहन, लेना चाहिए था, लेना चाहिए था ये गेम। $1800 यार, ये फ्री था, मैं लेना चाहिए था। बहुत ज़्यादा सेक्सी है ये। स्टार्ट भाई 4.8, ओ माय गॉड, 4.8 इज अ क्रेजी यार रेटिंग। खेलो अवतार पांडोरा। अरे ये अवतार का न्यू आया क्या रे मूवी? $1900 भाई, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा फिर इस चीज़ का जुगाड़ करना पड़ेगा फिर भाई। बहुत पैसा है रे, वो इतना भेज, इतना महंगा, 2000। डेटा राइट वाला देखता रुक, क्या देखता रहे तू? गोस्ट ऑफ तुशिमा, एक्सपीडिशन 33 गेम था मेरे पे, मैंने डिलीट कर दिया, डायरेक्ट था पीसी में, डिलीट कर दिया। अरे वो
अरे वो एक और गेम का ये है रे, रिसीडिंग कुछ तो नहीं, रिसाइडर कुछ तो है वो, विचर 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 विचर। मैं वेबसाइट बताऊँ, पायरेट कर लो। नहीं नहीं, 2000 रुपये मांगता हूँ ना किसी से। है बहन चोद। चलो भाई, ह्यूमन भी कंप्लीट राइट। वो भी खेल सकते हो, विचर भी सेक्सी है। हाँ चलो ना, चलो ह्यूमन भी कंप्लीट राइट का कुछ तो करता हूँ मैं। बाबा ह्यूमन भी कंप्लीट राइट, और फिर लाइक ये कंप्लीट होगा, वीडियो वगैरह डाल जाएगी, तो फिर इसके बाद अलग 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 अलग, ठीक है। हो रहा है क्या? दाढ़ी करी आज बाय द वे। ठीक, चलो फिर डन सी। आज के लिए क्या करे बता, आज के लिए क्या करे बता। गॉड में रायट चालू करने के बाद तू सीएस क्यों बोलेगा मुझे? फक भाई। ओ इसको 2.5-3 GB का अपडेट है, फक इट भाई, फक रायट भाई। अपन GTA भी खेल सकते। क्या ही गंदी डाउनलोड स्पीड। अरे हाँ, मैं स्ट्रीम भी तो कर रहा हूँ। चुप रहे गांडो, कुछ भी मत बोल। ये रुको, कुछ तो अपडेट आया। क्या है ये? योर स्ट्रीम में बी टेम्पररीली ब्लॉक्ड। We have decided video in your stream belonging to someone else. Your stream may be temporarily blocked if you plan to continue. Please ensure that your container has channel to their allowed list. कौन? कौन?
क्या वीडियो, किसका वीडियो देख रहा था मैं? मुझे तो दिख रही। नहीं 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 नहीं, वो पॉपअप आया कि अगर चालू रखोगे तो ब्लॉक कर देंगे। बट मैं दिखा क्या रहा था स्ट्रीम पे? मैं दिखा क्या रहा था स्ट्रीम पे? सियरा वाला बोला था ना बंद कर, आई गेस, बट वो दूसरे मॉनिटर पे चालू था। ये वाले दिखा थोड़ी रहा था, मतलब वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिखाया, बट वो है। क्या डिसाइड हुआ फिर? कुछ नहीं, अभी सीएस खेलेंगे, ठीक है। ह्यूमन बिकम डेट्रॉइड, वो बीजीएमआई की स्ट्रीम चलाई थी शायद। ए गेम खेलना छोड़ के कल के लिए थंबनेल बनाओ क्या भाई? जेन्युइन भाई, पूरे मेरा फोटोशॉप स्किल्स देखोगे क्या? एआई वगैरह इंटीग्रेट करके थंबनेल बनाएगा दोस्तों? क्या लगता है? एनिमेशन की डिग्री है दोस्तों वैसे मेरे पास। बोलो, थंबनेल देखना चाहोगे? थोड़ी देख सीएस खेल लो, उसके बाद थंबनेल बनाना। चलो ठीक है। इधर ज़्यादा मैप्स आने चाहिए रे। बैगेज मत करो, ये इसका नाइट करो, इसका नाइट में मज़ा आएगा। या इसका डे पे भी कर दो, डे पे भी मज़ा ही आएगा। गेम का साउंड वगैरह बताओ, ठीक है? रिकॉर्ड पड़ गई ना भाई। अच्छा, बाकी थंबनेल तो बेनी स्टूडियोज के देखो, क्या सेक्सी स्किल्स है उसकी। कुछ थंबनेल रेफरेंस वगैरह होगा तो बताओ दोस्तों। मैं क्या अकेला ही खेल रहा हूँ क्या? है? ओह, अभी तो स्टार्ट हुआ। ये जगह अच्छी मिली, ये नहीं छोड़ूंगा। छोड़ूंगा ही नहीं, ये जगह ही नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई, मेरे को लगा यार दूसरा है। ओए 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 भाई, मेरे पीसी बिल्ड किया था। 2024 में 2 लाख के, अब इसके प्राइस 5 लाख हो गया है। बात तो सही है। चाला रात का घंटा कुछ दिखता नहीं था। ओ भाई, किसी और नहीं मालूम। वो बंदा फोटोशॉप यूज करता है एंड उससे अपने चैनल को फोटोशॉप के अराउंड बना लिया एंड उससे अब एडोब स्पॉन्सर करता है। ये अपने लोग इनके स्पॉन्सर क्या कर
उसको अडोब स्पॉन्सर करता है, अडोबी। गेम का साउंड और मेरा साउंड ठीक है ना? ओ नहीं सॉरी। ओ भाई सिंपल वाह। कूदा रे। अरे भाई वापस मारा रे इसने। वाह नाइस शॉट रे। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं फंस गया हूँ। ओ भाई इतने दूर का मारा था। क्या मैंने एक को भी नहीं मारा ऊपर? बर्स्ट में लगता नहीं है इसको। अरे वाह। इस मैच के बाद बेनी स्टूडियोज की वीडियो देखना। ठीक है ठीक है, मेरे को लिंक शेयर करके रखना तब तक लिंक शेयर करके रखना। इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड किधर भी डाल डाल। बॉट पे। अरे वाह अरे वाह। अरे वाह हेडशॉट। अरे वाह मेरी जान। चल कांडू। शॉटगन है ये।
अरे भाई अरे चल दे दिया कट गया चूतिए गांड चली रे गांड चली गांड चली रे गांड चली मैंने किसको काटा वो नहीं आइडिया बट कटा बेनी स्टूडियोज बेनी प्रोडक्शन के नाम से This video is sponsored by Recraft. A few years ago, I built this bar in my backyard to host This video is sponsored by Kiddo. Some of the most epic battles happen in movies like The Lord of the Rings, the fantasy genre. Today we'll discover what makes for a decent fantasy movie poster and try to make something nice looking ourselves. Professional Starting idiot. with the title, then turning myself into a fantasy style sorcerer and putting everything together भाई ये into a copyright डालेगा। fire. फॉरेन के यूट्यूबर्स कॉपीराइट डालते फॉरेन के यूट्यूबर्स कॉपीराइट डालते ब्रो Keep that shorty in range as classics. जस्ट चालू हो गया 13-2 It's on the money. It sets up Rien's to at least drop a body, but still, they're just happy to bulldoze, right? They can stay as a pack, fight as 5. Plan's going to come down, and you're looking at what's remaining. Comeback does get a chance to maybe do something, but man, it just feels like it's not landing for Heretics. Even in like that silly 1v1, there's just like things like फॉरेन that. के यूट्यूबर्स कॉपीराइट Just, डालते you feel हैं like you can't get into a game. वो नहीं सही रहे थे किसी के Bucky here in a 1v4. It would take an awful lot. Could you imagine though? The odds on No, this I one. actually can't imagine, no. You can't see it. Can't visualize. Maybe an exit. Even think KC are going to give him the opportunity here. See Levens. Time to jump. Still hanging about. Grinning, man. They're happy. They're having I just saw Sugetsu during that kind of engagement to War Heaven. He was literally just laughing. That's awful. Get confident, guys. They're laughing at me. They're laughing at me while I'm trying. Please. Come back and give it up to the spike. That's 4 standing. And the second करता हूँ round मैं for स्ट्रीम KC. का जरूर चेक आउट करूँगा And again, even just But coming वो back foreign into what we यूट्यूबर्स heard किसी there से from सगे the नहीं coaching रहते staff of Heretics, Again, opening 2 इंडिया के ही rounds, सगे नहीं not रहते necessarily मेरी ones स्ट्रीम that, कोई you're going to come out दिखा and दे now तो feel मैं भी confident in बोलूँगा your buy कि round भाई to क्यों put something in motion टीम or, बढ़ रही तो like I said, take some But, risks. I mean, there वहाँ is an के तो कोई opportunity सगे here. नहीं It's रहते obviously a pretty light inventory in terms of a bonus round here for KC due to एंड बाकी the approach of थंबनेल the बना previous. हुई है हाँ अभी रेफरेंस देखते हैं ना Sugetsu now does offset that a little bit with a rifle. ह्यूमन बिकम डेटराइड And very पहले passive यूट्यूब hold पे towards C देखते हैं here इधर ही देखते हैं चलो उधर क्यों on the देखें side of Heretics. अच्छा Maybe नहीं actually इधर almost ये करते हैं और इधर ये anticipating करते हैं further ठीक है pace to capitalize on these SMGs, but ये Benji करते इधर और ये करते इधर gets a glimpse. Forced away here, and Speaking of confidence, to get to the one with the upgrade. Just on that Vandal, and he's got timing. Oh, does he? No, okay. Boo's actually going to get the drop on that. I thought he might have threaded the needle. Not the case. And you can see Casey starting to suffer on the side, but his Arves takeaway comeback, and that's going to certainly keep you feeling a little down and out. But it's taken got Boo two to through the do it smoke. all. Boo is the only one to be drawing blood so far, really. 3 kills in this round. the flank coming through from long though. Look at Woot in the background. Surely that's where it stops. That's where everything should be wrapped up. A little hesitant to feed a weapon in, that's fair. I don't blame you to pause and hit the brakes here. Well, Dosu's got upgrades, so they're waiting for somebody to overstep here on the side of Heretics. Still, consideration 30 made seconds towards backside of C-Long. Shadows committing to hold this CT side, right? Like they've almost had to leave some space open. Can't really challenge along either.
Oh my god, might have been seen there, not sure. The net gets closer and Rien's the one to capture them both. The view should be no problem. So Heretics will be okay, but gotta say, that was off the back of Boo there. Yeah. Catching that timing in middle, playing And well on the side. I believe both of them blind through the smoke. Didn't actually catch them on camera, but again, 2 kills that you're sort of gifted to shut things down here. Yeah, literally, again, that's what wins you the round. So ultimately there's a couple of upgrades to be had, and unfortunately at that point, I mean, KC called, well, make the right decision to kind of call a freeze, but also nobody comes barreling out from Heretics to feed into that situation. This will prevent the bonus. KC back on rifles. Arvez just 1 away already from the ultimate. The way out the shooter on a long route probably. Yeah, going to try and take this space away. I don't know how I feel. Yes. Oh god. I guess you got to take some chances, right? Try and maybe get involved a little, but that's A-Long gone and Rien's quite alone. Photoshop चालू हो रहा है. अरे AI वगैरह भी बहुत इंटीग्रेट कर सकते हैं अपन. उसके टाइम पे AI नहीं था. अपने टाइम पे AI है. They are close on this. Maybe playing contact off this flash pretty much. Yeah, spins in. Nice from Rien's. The paranoia not quite there in time to be supporting of Rien's, but the rest can at least put bodies behind it. Still a fight to be had on the rest of the map, and Wu on the refight. Takes away the pressure from Long. Leaves Shados with limited options. Yeah, down to 10 HP, taking a ton of damage there. See question marks elsewhere on the map now with Sugetsu falling, but probably just going to opt to hold on to this rifle. I think it's really doable here without some solid information elsewhere on the map. Obviously, we can see Heretics obviously rotating towards. I nearly said rotating. The reference no one will get, but Literally internal Discord comms. Yeah, this one's a little bit of a pause on this. But what do you actually make of Phoenix? I haven't actually asked you about this. How do you feel about seeing it here? I mean, I love it. I particularly love Arvez on it as well. I think he's shown that he's very proficient. I think as well, talking about the ability to take risks and whatnot on the defensive side, if you can farm up that ultimate, it's just another tool that you can throw out as a probe. You can you can set things in motion in terms of just taking engagements on the defense. I think it fits quite nicely into certain teams' playstyles, and particularly they see how they obviously want to play. Yeah, seeing if it actually works out in this. I mean, Arvez just continues to impress me in a number of situations. I think he's shown that he's very versatile. I mean, you didn't see this off camera, but a chance for Sugetsu actually to find a second as well here. That could have made things a little bit different, but as it stands, a good chance for Heretics to kind of build a bit of motion, a bit of money behind them. Ult-wise, not a million miles away. Rien's already has his. And financially, obviously, he's in a far better position than KC right now. So a little bit of a shaky purchase, still functional. Gonna be lacking in certain areas. Because Twitch पर को गाने चलते रहते, लाइक कोई भी चला रहा वो सीन रहता. हाँ, वो उधर है. उधर कॉपीराइट नहीं लगता क्योंकि उधर अपलोड ही नहीं करता ना वैसा. ट्विच पे कॉपीराइटिंग माल है ही नहीं क्योंकि ट्विच क्या ही कॉपीराइट डालेगा. ट्विच लाइसेंस किस चीज का लेगा कॉपीराइटिंग का ऐसा. YouTube पे copyright क्यों है? क्योंकि YouTube fully just send the body in, but Rien's already going to catch Levin, so that's going to make things harder. Keep in mind that Doja does have Spike there, so could have been out on them, wasn't in the end. They've handled it well. Heretics were keeping this in hand, only losing Boo thus far, and still keeping vast majority of control on this map. Difference being now Heretics winning some key engagements, not necessarily confident plays, but shutting down some of the ulterior motives for KC on this attacking side. I'm the one got $1 million. See a lot of space towards A, but pretty comfortable in terms of the coverage here. In fact, Sugetsu and Dosia have taken a ton of damage. 30 seconds left. Hard to swing this 3v4. Yeah, just, again, the fact that Heretics are fully aware that A is very, very vulnerable. We've seen nothing elsewhere. Going to hear the smoke investment. Going to cause a reaction. And should be able to play very safely for a retake. The shock dart a little too short to really deny Doja here. Monitor kam pad gaya. Is in 3v4, and as you noted, the HP is very low for the KC side. Dart ready.
Now they've got to work together. Let's see that timing and synergy and spacing. This is what it's about. Ignores the first, goes for the second. Comeback's gone, but the spacing's good here. Sugetsu would have to go absolutely wild. Can't do it. Woot comes in, Rien's in unison. It is Heretics staying alive with 2. Yeah. And another round posted. In the recon, getting maximum value here, even if it doesn't clear graffiti, but the flash perfect from Woot. Makes it really, really hard to dig themselves out of that situation on the side of KC. So 3 unanswered for Heretics. KC back in a bit of an awkward spot in terms of the bite. Arvez, again, he's just half a second away from probably getting a kill here. Like even catching a flash and maybe a near sight as well. But meanwhile, it's Levin to fall to the Hunter's Fury on the back of that, which again is that support system that potentially could have found value alongside Hunter's ultimate. One thing I am going to keep a bit of an eye towards, even in the successes, is the fact that the comeback is quiet here. Now, he's on the Neon, and honestly, also very selfless, going in there first, just trade me in, that's fine. Like, he was playing his role, I'm not going to be upset about that. But we know his potential on the Neon, and we've seen it on this map in the past. We know how good he can be. मेरे को ध्यान में रहना चाहिए. करता हूँ doesn't have to be early, but would like to see him activate. वो भी करता हूँ. टेंशन मत ले भाई, सब करूँगा. Heavy emphasis on this B side and a very quick plant potentially. Levin going to invest the ult on this, but Woot's getting right in there. Dangerous though, burning alive, and they do go down. KC still in with a fight in this 3v2. Hold up. And speaking of comeback, he's one of the 2 alive, yet to get off the starting blocks. And now trying to do the dance. Levin outdoes him, breaking the ankles on that. Now Boo's done some great work, but once again, hard question, but the HP, Mike, it's not impossible. No, certainly not. Needs to find बताओ क्या हेल्प चाहिए. अरे मैं बोलने वाला था तेरे को कि मेरे को Instagram पे मैसेज आया कि रख मल्टी स्ट्रीम. To pick up Levin. Still some time to play with. Yeah, still got smoke back. Well, a little bit to play with. 8 bullets though, and that time's starting to tick. You can kind of hear it if he's lazy on the clear or just takes a gamble. Yeah, there it is. It kind of falls apart on that one, and you feel it. You know it's kind of dipping away. Time is the factor. Shadow should not lose this. And I don't think he does. Yeah, time is very much gone here. Nice attempt from Boo, but too little, too late. AC just barreling towards B. On the back of the ultimate from Levin. Yeah, initially here, it looks like they might just win out. I mean, Woot gets 2 kills, but at the same time then, Arvez, Levin and Sugetsu all find responses. Prevent Heretics from capitalizing on that pressure towards the plant. That's a tough loss as well. And not a full investment. I believe it was 2 rifles. I didn't fully actually get a glimpse of the purchase there, but here we go. This is what I kind of wanted to see, a little bit more of an attempt to pressure. Hard to do it when you're 7-0 to 5, but 4 positioned this side, by the way. Oh god, I didn't even see there was others behind this. Okay, maybe trying to make something happen. Still got util in the way to get past, so it should ring the alarm bell, and that's a lot heard here. It's not looking good, and they can't really do much off the back of it. Yeah, they're behind enemy lines, but Arvez, good flash, good follow-up, finding more. Casey fighting back. It's only Boo. It's turned into the Boo show, which is not what I wanted to see. There's got to be more than this. He'll be last alive again in a 1v3. Doesn't get the upgrade, so makes this one even more unlikely than the previous. KC don't scramble to make a decision here to take another site. They actually stand their ground in spawn. Huge investment in terms of bodies from Heretics. Again, it is a roll of the dice. We were talking about them potentially. We want to see them, in terms of confidence, taking risks here on Haven. It's obviously the ethos that suits this map best. So I guess he does find it. Watching this spot. Again, unfortunately, going to be a blow to the overall confidence. Wouldn't surprise me to see a timeout maybe in the next couple of rounds for Heretics. Now that KC have taken the lead. They're starting to get their footing and starting to get a nicer read on the map, and a couple of these more aggressive plays are working out, really. Yeah, Boo's in at 10-4. Like you said, it's no discredit to him, but not what you want to see with this composition and certainly here on Haven.
Yeah, it's like if I'm looking at Wu, I'm looking at Comeback, these sort of players, even Rien, throw him into the mix. Let me see what you can kind of bring here. But I am at least seeing Wu kind of posture up towards Sewer. Maybe try and stake a claim on one part of the map, alleviate the pressure so they can rotate extra bodies elsewhere. It's not necessarily a wrong read. We know that KC seem to have quite the affinity for pressuring that B site. Going to be spotted on this, but sees nothing else. Right, Pelea here, if you want your fragger, it's going to be Boo on the B site. Does have Comeback nearby as well. I think Rien's there, but overwhelmed. Comeback finally going to get things going. Arves goes down. Rien's looking to get invested. Run down, literally. They are just taking every mad fight possible, but Boo's still standing guard. He's kept the space this time. Oh, she's got ult as well, so can switch things up a bit here. So Getsu does make his way onto C site now, taking some of this space away. Obviously, Neural Theft went in, information will be relayed. Shados does have the Hunter's Fury here. So they need to make something happen on the back of Woot's ult. Okay, he's seen pretty much all of this. Commits on towards Plat. Luckily, he's good for it because no one was quite ready to trade on it, but Heretics flooding back in, looking like they're a little bit more confident in those individual fights. Shados, well, positions noted, does has Hunter's Fury, but what are you meant to do in a 1v3? And there's the smoke. That is it done. Quick as anything. Benji, good shot. Much better from Heretics. I was a little scared when Wu came out of that ult and no one was there quite ready to punish. Commitment to the timing as well. Obviously the awareness being the Hunter's Fury is available. So immediately taking control of site back in their favor. All tied up 4 apiece now. See how the ultimates land here. And Heretics well equipped to deal with, obviously, the audible that KC call. Even a little bit worrying there, seeing the timing, actually, of Benji still tucked into that smoke. A chance, really, for Sugetsu to come and find that kill for free. But, all tied up. Heretics keeping things neck and neck here. Take a bit of that. That's an ult orb. Alves has his. And Woot going walkabouts. Love that. This is better. This is better. And Benji, yeah, set up. This is fine. This is actually way better. Finally seeing him getting vested. Woot can get out of there. Doesn't need to stick around too long. Alves took a beating in this, and they're down to 2 players. This is what we wanted. Yeah. Take a bit of that confidence fight. Take the map back. And actually do something with it. We're playing deep here, playing smart, playing safe. Aldron's clearing mid as we speak. Alves is going hunting. He wants to get closer. He's going to spot him on the corner. No one in garage. See if they can tighten up their spacing a bit. There's limited threats on the other side, though. Alves does have the Vandal, no armor, no shield. Shadows just down to the Sheriff. Good flash, though. Great timing on this. Hold on, Rienz. We're going to need some magic from you, mate. 1v2. He's got it. Pulls it out of the hat. And Heretics staying alive. Now with the boost to the confidence, proactive play from Heretics pays off here. Obviously a great read on what's going to happen with Arvez's ultimate, the crunch through mid. Absolutely dissecting KC's initial setup here. Again, they just can't get in garage quick enough. I'm just happy to see calls like this. Yeah, and this is the sort of thing to commit to this as well. Chance where it's not necessarily feeling like a comfortable half, but at least you got the benefit of, you know, not being up against the ropes in terms of money. And there's probably an extra body in mid. That's why Sugetsu's caught off guard when he swings window. So yeah, credit to Heretics here. Certainly not shying away from fights. This is what the doctor ordered. Now, the money going to be broken. So Heretics are starting to win out in the battle of attrition, really. 3 players on the A side this time, though. KC back in a position to consider these approaches towards B. Oh. And you might be even connected there. He does. Shados will fall. They found my wide. They found my wide. Okay. In the meantime, the kind of exchange of space, though, B side gets taken. But honestly, Heretics have been pretty scrappy on these retakes. But look at this kind of aggressive posturing, but so many bodies. Maybe not expecting those 3 players already on the A side like they were. And now just Levin and Dozier.
This I won't completely remove Vision, but it will remove Benji's head. Hold on, Doja. Oh, it's on for the double, but can't be converted. How are we getting this close, man? Look, Heretics are in the lead, Michael. Everything's fine. It's also fairly telling that that swing into A-Link, and there's 3 members of Heretics on the other side. It's another kind of nice thumbnail. अरे अभी बना कहाँ है? बनने दो. Continue to find this space on B. I think they're going to feel pretty confident about taking some more space behind it. Plenty of ults to work with now. Maybe a little overzealous towards Garage, but again, lesser purchase, so trying to take some risks. Dosia again. बनने दो. And just 2 from there. Always gets 2. He's good for 2. Always good for 2. Did Comeback ult in that round? Yes, he did. Yes. Still not certain on this one, but Woot's once again taking the space here. Now, have KC learned their lesson yet? No, apparently not. But this time there is a trade. Very quick trade, yeah. That was much, much faster. Maybe expecting a bit more of it. Learning on the fly, but again, you're looking at the ults here. KC do have plenty to play with. The lighter side B and C here for Heretics. Comeback trying to make something work with the operator. See Sugetsu, a chance here to reveal some info, but is being guarded. Comeback reading that. I have a chance to take away Sugetsu here if he goes for the neural theft. Or just going to sit on it, wait for a rotation, and then best it at the right time. I mean, a wide open C site, no trip here, only one towards Garage, so Comeback actually gave up the angle on window. I thought he was still holding that, but maybe getting a little bit more curious as to their... Now they know they've got freedom. Through Garage, and look how deep Levin got. Luckily enough, Benji didn't overcommit to the angle, because he could have been dead then, untradeable. Levin's got... Oh, Shadow's got... Yeah. Does Levin just want to stay posted on this one? Got Doja with him. Heretics going to be held up for a second here. Yeah, here we go. Information and on top. That's at least going to be 1 spotted, potentially 2. Yeah, big tags coming out here. Good damage and good blocking, but Hunter's Fury on the other side as well. 11. Oh no, Rienz gets absolutely backhanded, and Doja holding the line, leaving Boo completely undone. He ain't got this one in him. KC. Layers to that then. Levin just seems to sit in his ult for so long. I think obviously the plan there to make use of Rienz's Hunter's Fury as well on the other side. Able to pop out and just find a freebie and then be in the back lines of Heretics. Levin the one to lead the charge here in this half, 11 and 7 for KC. Yeah, it's the perfect timing as well, because it's when the other players from Heretics are then pushing forward to try and take that space, capitalize on the pressure, but Watch your eyes. a broken by here from Heretics. That's why the rifle's gone. Yeah, I thought he might have been forced off that angle, but no, he tried to go back for a little bit more. That's an early man advantage. They can keep that pace. Yeah, another setup that just leaves Benji in a position. I mean, a Sheriff here, but he has so much of the map to cover. When you're playing against a comp with like a Phoenix, a Yoru, Benji used to be one of the masters at holding down like solo sites, but he's holding most of the map. The rest, it's a gamble, really, I guess, for Heretics. See if we can even drop a body. No, overwhelm KC. The site's theirs. There's almost no fight back. a clean plant, uncontested. Not much in the form of utility here in the post, but Midoshi's got a TP. Arvez still with some tools at his disposal. Deep owl drone too. Looking for that info. Very late to this. They were over on that A side. They've got a couple of upgrades, sure, but they're very late to the party and completely asleep at the wheel. Even KC just want to get involved in this, and Rienz, nothing to be done here. KC, they found the solution towards the end.
But Heretics have kept this at least. ठीक है Plays चल। for और a अभी while. फ्री फायर खेलने वाला हूँ I'm देखेगा still फ्री not फायर sold. I don't think we've seen enough assertiveness on the side of Heretics, particularly though on the defensive side. When you're playing this composition, obviously now we're going to the attack. There's a chance for comeback and Woot to maybe be a little more aggressive in terms of approach to sides. But yeah, I don't feel like KC should have been able to tie up that first half. Fair. So I quite like that we saw Woot starting to explore mid a little bit here and there, but as you said, Quite late on in the day. Exactly. Getting the right read on potentially the Arvez ult round, but in terms of again, I don't want to come back to just comebacks. क्या खाया आज ध्रुवेश ने Well, this is the side. Yes. Well, this is the side now where you can turn it around, but you shouldn't be in a position to turn around about half. Yeah, I'm on your side, and Arvez already setting the tone that he wants to be quite aggressive here. Willing to take a fight down middle, will lose his life on the trade out, but took away Boo on the other, so a little bit trickier maybe. Maybe you have to be more direct. Levin, he can't get away, he stayed around all too long. मैं तो शादी There was में a गया chance था for him क्या to बात get out कर of रहा that, but है he wanted, I guess, to try and take down. I think it looked like Benji on the other side, so at this point, 4v3. So actually Paranoia will land here. Shados going to find one, but Benji able to counterbalance that. I mean, they needed something. तेरी आवाज कम आ रही है Falls apart, हैं? Rien's luckily stabilized. अब कैसे आ रही है It did come down to that 1v1, but Heretics going to pick up the pistol, and that's huge for them. Get them a step in the right direction. अब कैसे आ रही है Slight overstay on the site. अरे मम्मी के फ्रेंड की बेटी See, two bulldog, well, that's free. अभी ठीक है Benji just going to bring it नॉनवेज down to the नॉनवेज next. कर गुजरात में नॉनवेज इतना नहीं मिलता These ना early rounds absolutely crucial जो in नॉनवेज terms खाता है of गुजरात how he's में gonna feel उसको ऐसी approaching गलत second नजरों से half मतलब overall. ऐसा देखते हैं ना कि यार ये नॉनवेज खाता है ऐसा 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 रहता है ना तुम्हारे इधर मेरा एक दोस्त था वो बोला था इधर भाई बहुत अजीब है जो अंडे विंडे भी चुप के खाना पड़ता है We saw very early on Alves. All gas, no brakes, and come back gonna handle him. This was gonna be an all-in. It's just gonna be classic, so don't worry too much. नॉनवेज The बहुत Heretics कम have है good chance बहुत to कम farm up here. Come back to build towards that ult. He's halfway towards it already. This is good stuff. Levin. लाइक ऐसा गलत गंदी नजरे से देखा जाता है जो नॉनवेज खाता है Just a little bit. He's even going to have an opportunity to try and come back. Yeah, I was going to say, come back. नहीं Should ऐसा drift away from A-Long ऐसा here, probably रहता pick up the नहीं है same. बट लोगों को स्मेल नहीं पसंद तो मेरे को एक बात बता 29 HP. ऐसे He's चिकन के दुकान वगैरह है कि नहीं है but now on जहाँ his पे long चिकन sideline. मिलेगा absolutely find a freebie. A 3K in round 2. Good stuff. An in-zone flawless for Heretics. Get themselves. फिर तुम्हारे ahead by मैकडॉनल्ड्स 2. में वगैरह चिकन बर्गर वगैरह है कि It's नहीं the उधर eco round sort of Definitely. feel Yeah. out the game. For sure, especially I think that's probably a bigger picture question in terms of stepping into this roster this year. No more secrets. You're looking for kind of confidence boosters for him. है लेकिन तेरे को Because मुस्लिम एरिया में जाना it's just पड़ता not been तब many. मिलती No, that's true. Obviously, last week being the outlier और to that, but overall, ये बर्गर I don't think we're किंग seeing a comeback डोमिनोज to his वगैरह उधर potential. No, and you can already see a bit of an adjustment. MCD here. So उधर come वैसे back onto the outlets में rifle, रहता we're gonna have chicken. that outlaw put into अच्छा। Rien's hands. So interesting to see them kind of approach it in this way, and it's a very all straight towards B. And the paranoia is good. You can क्या see the कर रहा है hesitation. अरे They're पप्पा actually सो गए really ना good move. They've got आ, the fight क्या आज भी गया था क्या Alves इंटर्नशिप straight रोज ही away जाता है into the ना well. Benji trying to put up क्या that आज भी first थक गया है back क्या side. Doja again. आजा Still कुछ got कैजुअल damage. खेलते KC कैजुअल winning वैलोरेंट out in खेलेगा the बता brawl, but there's मेरे को still बट only three अपडेट of them करना standing. पड़ेगा They've फिर lost a couple here, but still. Rien's, this takes a lot. They got smoke in the way. कैजुअली He's only खेलने got आ रहा है four. क्या And they got big boy shields. Yeah, ऐसा ही टाइम more पास damage would be great. Would be nice. बता Does he get one? No. Tag? इट इज स्मेल दैट पीपल Yes. डोंट लाइक Let's see, get I was going to go for Doja. I think he's going to hit some mad flick. What do you know now? Let's see, good. अभी तो आया शादी No, he's से already got his अच्छा second जब hit. तू स्ट्रीम देख रहा था तभी भी शादी में ही था क्या फिर He just stops at 2 every time. He's like, oh, Well, I've done my my work. work here is done. Yep, see you next round, boys. 30 seconds left. I'm waiting. So So he knows. Does that count? No. No. Didn't even tag him. Just chill. Fine. Headshot. Sugetsu. Headshot? You're up in the अच्छा ante. Got bold. Oh, no tag. No Jados the tag. heartbreaker. Yeah.
Devastating, 8-7. 3 left standing for KC there, so they should be able to get a decent purchase behind them. Obviously not too many issues with Heretics either. I can imagine they'll be perfectly sorted, so we actually get to see a good round here. I'm still not sold on Heretics yet, but they are still at 8-7, so I'm waiting with bated breath. You know, because the problem is, I think the issue is, if I didn't know who Heretics were in the past, this would be fine. The issue is we have personally seen their highs. We've seen the best of this team. We want to see it again. And right off to the beginning, Levin trying to take that space in sewer. He does have help here. Send him over towards long. You're a lucky boy. Extremely deep on that angle. He's taking some big risks again. Acute gamer 1.5 घंटा लेट आया है भाई तू. To get away here, I mean, just tagged down to 89 HP. तेरा वेट कर करके थक गया भाई बदीर. Potentially for Heretics to play into here. We'll see what decision they do make. Only Shados and Sugetsu here to hold down the 4-1A. पापा नहीं सोए अभी तक. Already though, I mean, Levin making good moves on the other side of the map just to confirm there's no lurk. Or active lurk, I should say, up C long. If anybody gives away a sound cue here. And it's been silent for too long, right? That's the thing that worries me. Now, the door. The door is, you can look through it, and now Heretics, the position, the approach is seen. Now they have no idea about Long. They don't know about Levin. They know about Arves, but that's about it. So the Paranoia goes in, supports there. Levin can try and decide when he gets involved. The timing is not there for him. Heretics, diligent on the clear. Playing a little late, but it's worked out. The C-take is in. The plant's there for them. Well navigated. They've managed to find it. Levin just, I mean, too anxious. आएगा क्या बट नॉर्मल खेलने? दुर्वेश. Again, no confirmation. दुर्वेश नॉर्मल खेलने आ रहा है क्या? अरे आज तो सुबह सुबह आके मैं सो रहा था और पापा न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ के सुना रहे थे. क्या? नौकरी से निकालने वाले हैं ऐसा क्या? 1600 means Arvis and Dosia that are going to struggle coming out of this in terms of the purchase. जिसमें गाजियाबाद की 3 सगी बहनों ने गेम के चक्कर में सुसाइड कर दिया. मेरे को लेट होगा भाई. तो मतलब मेरे को एक बात बता कि जब तू गेम खेलता रहता है तब तू दरवाजा लॉक करता है और गेम खेलने के बाद दरवाजा खोल देता है क्या? ऐसा करता है तू रोज? सोने के टाइम पे दरवाजा खोल देता है. For Heretics, they've got what they needed. It's kind of working well. They've got that rhythm to them. They should be happy enough. I'd like to see KC just touch base, really. Make sure they're on the same page of how they want to be dealing with this. I mean, maybe before the next. But this, obviously, mustering together a purchase here. Obviously not feeling too bad about the game plan in general. It's maybe just an execution issue. Let's have a look. Yeah, no issues in their mind so far. Ult-wise, we've got Rien's already there. Benji, one off of his, one away from comebacks too. So a couple of key pieces could come through for Heretics here. Already going to try and fight for that space on long. Reinvestment of the smoke. And it's messy down there. Smoke on bricks causing a bit of an issue for KC because it looked like they were willing to go forwards with that recon. Shadows going to clear this space behind. I think, yeah, comeback already spotted. And probably very telling about what's about to happen if Heretics proceed here. Dosia on an off angle on the top of the box. Good for 2. Plenty of targets. Timing's everything. Dosia, when do you recheck? When do you look now? Actually doesn't land it, but the Paranoia is good and he can fall away from this. Invest the one way, but they are fast approaching. Looking like they want to burst up here, but it's actually Rien's to win out towards long, and Levin again goes down. This is starting to become an issue. Hunter's Fury going to connect as well. Shados dead, and Rien's just worth his weight in gold in this already. All on the rotate though. They're cancelling on this. There's still a question mark about Sugetsu. I mean, plenty of time left to play with. Still 5 alive, but they have to make moves quickly. Don't want to see this under 10 seconds by the time they get to site. Yeah, seems to get to be more trust. He's got to be aware of this. Yeah, challenge this. No, 100% not. I don't know if he can maybe just see और गेम को भी तो कोरियन लव गेम थी. ये कोई आलतू फालतू गेम नहीं है जिसमें टास्क करने देते एक्सेट्रा. नहीं मैं क्या पूछा उधर. हाँ चल ठीक है ना. मैं क्या पूछा तेरे को कि तू गेम खेलते टाइम रूम का दरवाजा बंद करता है.
और गेम मतलब गेम खेलने का सोने के टाइम दरवाजा खोलता है क्या रूम का? गाजियाबाद की 3 सगी बहनों ने सुसाइड कर लिया यार। एक बहन तेरी एक बहन मेरी हो जाती। गाजियाबाद किधर है? We get the unfortunate kill here as well as 11. Obviously, Shados, not much you can do in that situation. He gets tagged on the first comeback. That's nice. Beautiful kills from him. मतलब कुंडी बंद करता है, कुंडी खोलता है। Yeah, it's time for a little bit of a closer look towards KC because, again, right, we all saw Abyss. We saw how good it looked when they were on the same page, when everything's kind of teeing up, lining up. They have solutions. They're proactive. They understand that really, really मैं genuinely पाकिस्तान सोच रहा था। Here we're not seeing the same sort of diligence in the same way. I'm curious about 11 as well. Oh, because it चालू feels हो like गया he's क्या? digging a bit too deep at times. चेंबर यार दूर हट जा यार वाइपर से। Too much of a risk. We saw it, I think, on the pistol. We've seen it over towards sewers. A couple of चेंबर occasions where he's बीकेल trying दूर to हो go जा यार a वाइपर little से bit मेरी। further, which I get the want to, but it's you're trying to temper it. वाइपर बहुत प्यारी यार। वाइपर बहुत प्यारी यार। Yeah, I mean, Arvis had a much slower map than you'd expect as well. You come onto the Phoenix, you basically want to be maximizing the ultimate. You could even just go फॉर्मल वगैरह क्या है इन्फोसिस में? ड्रेस कोड क्या है? फॉर्मल पहनो लाइक। अबे मैं तेरे को एक बात बताऊँ क्या? लाइक तू अच्छा मेरे को पहले बता दे क्या फॉर्मल अटायर वगैरह क्या है? ults for KC to follow this, but certainly with the advantage here. पहले बता फिर मैं तेरे को कुछ सजेस्ट करता हूँ। अमन की जली थी ये ट्रेलर के वक्त में। फॉर्मल तो नहीं बट पैंट शर्ट टाइप थोड़ा। एंड लंच वगैरह देते क्या वो? ओ भाई थैंक यू फॉर सपोर्टिंग वैलोरेंट। हाँ So the question mark if anyone's policing that walking in towards window. Certainly an opportunity to do damage, not going to matter too much. आईजी इंटर्न्स के लिए ऐसा होता रहेगा बट होगा तो फॉर्मल ही। मतलब क्या उधर तूने यूनिफॉर्म नहीं देखा क्या? He's got his ult. I was going to say, can you get हाँ भी है क्या स्किन? Yeah, easier said than done. वो आपके ऊपर है कि खाना कि नहीं बट मिलता है। Especially with kind of backpedaling out of sight now. लंच मिलता है। Chance. Oh, come on, Blue. Ooh. That's not bad. Okay, Heretics closing in towards 12 now. We're at 11 to 7. We ये अच्छा कलर लग रहा है। लेट्स सी। got ults coming. ओह मिलता है। अरे यूनिफॉर्म क्या है? सब पैंट शर्ट में ही थे। मैं तेरे को एक सजेस्ट करूँगा, देख तू तो अमीर है वैसे बट चीनोस ट्राई कर। चीनोस अमीर इन द सेंस कि मैं तेरे को बोलने वाला था कि अगर तेरे को ट्राई करने का है ना चीनोस ट्राई कर। चीनोस एक पैंट का टाइप रहता है। जूडियो में जूडियो रहेगा आजू बाजू, तो वहाँ पे जाके एक सस्ती सी उठा ले, कभी ब्लैक ग्रे उठा ले अगर तेरे को सिर्फ ट्राई करने हो तो। बट चीनोस एंड पोलो टी शर्ट या फिर कॉलर वाली टी शर्ट, सेक्सी शिट भाई। लाइट कलर की चीनोस, डार्क कलर का टी शर्ट, डार्क कलर का टी शर्ट, लाइट कलर की चीनोस। यू कैन पेयर दिस एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड लाइक एकदम क्लासी लुक लगेगा। क्लास लिटरली क्लासी लुक लगेगा। इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन 100% ट्राई। बट तू बोलेगा कि भाई ये चिंदी भाई जूडियो से बोल रहा। तेरे को जहाँ से खरीदना, रेमंड से खरीदना, रेमंड से खरीद। वो टी शर्ट के ऊपर टी शर्ट नहीं चलता रहेगा तो तू ये खरीद शर्ट ले सकता है। बट चीनोस ट्राई कर। एक को गाली पड़ी। चीनोस ट्राई कर। चीनोस इज गुड। क्योंकि मैं ना बहुत 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 ज़्यादा कपड़े पहन चुका हूँ मैं, फॉर्मल वगैरह। और उस दिन मैं ऐसे ही जेन्युइनली जूडियो में गया, मैं सिर्फ वेट पार्किंग का यूज़ करने कि मेरे को गाड़ी उधर लगा कि किधर और जाने का था।
तो फिर मैंने वो करा। पागल है क्या लवली, मैं तो 99 में 3 पैंट वाले दुकान में जाता हूँ जूडियो, तो फिर भी थोड़ा ब्रांड है। देख मैं तेरे को बोला अभी, कुछ लोग बोलते हैं छी भाई जूडियो क्यों जाने का, ये क्यों यूज़ करने का, ऐसा ऐसा। मैं तो बोला भाई, मैं तो बोला। कोई बोलता है छी भाई जूडियो सजेस्ट कर रहा है, क्या चीज़ है, सुना है मैंने ये भी। तो फिर मैंने तो बोला कॉशन रख के कि क्या मारा है। तो चीनोज ट्राई कर, चीनोज इज़ अ वेरी वेरी गुड टाइप ऑफ पैंट वगैरह, कर मस्त। अरे यही मजे भाई, इंटर्नशिप है ना स्टंट करने के। भाई मैं तो कपड़ों के ब्रांड वगैरह से लन फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम तो बताना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे फॉर्मल्स ट्राई करे। एंड उस दिन जब मैं जूडियो में गया, मेरे को पार्किंग में गाड़ी लगा, दोस्त को था वर्क, 15-20 मिनट था उसको आने को। तो मैं सोच रहा तो मैं बोला उसको कि भाई मैं आता हूँ। वो बोला मैं आता हूँ 15-20 मिनट में। मैं बोला मैं क्या करूँ, वो बोला जा जूडियो में पीछे। मैं बोला ठीक है जूडियो जाता हूँ। फिर जूडियो के अंदर गया, ऊपर गया मेन सेक्शन में, 2 फ्लोर में इधर, बहुत जूडियो इधर बट फिर भी ऊपर वाले इसमें गया, दूर में था थोड़ा, उस उधर गया। और उधर मैं देख रहा बहन, उधर उन्होंने लाइक पोस्टर्स वगैरह रखे थे मॉडल्स के, पोस्टर्स वगैरह रखे थे मॉडल्स के। एंड उसने लाइक प्रॉपर एक पर्पल कलर का लाइक वाइन टाइप शर्ट, उस पर फिर लाइट कलर की चीनोज, क्रीम लाइट कलर की, फिर उसने येलो कलर का टी शर्ट पहना, तो ब्लैक कलर की लाइक ऐसा बहुत अच्छे कॉम्बोज थे। और फिर मैं उनको बोला कि मतलब लाइक ये फॉर्मल वगैरह, वो बोले ये तुम लाइक डेट पे पहन सकते हो, अगर फॉर्मल पहनना है तो ये भी पहन सकते हो, और शर्ट भी इसके ऊपर पहन सकते हो। आई वॉज लाइक अच्छा दिस इज़ गुड शर्ट भाई। मैं बोलूँ, मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, मैं अभी मेरा थोड़ा सा होने दे, मैं तो क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट जाऊँगा, फूल उठा के लाऊंगा जो मेरे को पसंद आते हैं। टी शर्ट्स अलग अलग कलर के, 2-3 पैंट्स, 4 एक टी शर्ट्स भाई, रोज मस्त पेयर करूँगा, फक इट भाई। और नीचे स्नीकर्स पहन सकता है, या फिर लाइक शूज़ वगैरह जो होगा वो करूँगा। कभी बाहर वगैरह जाने का रहेगा तो अरे एकदम सस्ता है। और कुछ लोग रहते हैं भाई जिनको बहुत ये रहता है कि मैं महंगा ही पहनूंगा, मैं ऐसा ही पहनूंगा, मैं वैसा ही पहनूंगा, तो उनको वैसा से एनीवन। Sound sensor out. All missiles away. Time to hunt. Ultimate ready. No escape. Barrier deployed. Enemy spotted. Hey. Reloading. Reloading. Pull them to their grave. Nothing there. One suppressed. क्या बात कर रहे हो? Ready. मैं तो 800 का पहनता हूँ, फिर भी सेक्सी कंफर्ट और मस्त दिखते। Found one. You want to find it? You and me. कुछ लोग को कितना भी करो कम होता है, और कुछ लोग को कुछ भी रहा बेर मिनिमम। मेरे भी पैसे सादा सा टी शर्ट मैं तेरे को सजेस्ट करा, क्योंकि देख तेरे को अभी लोगों के सामने जाने का है, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल रहने का है, ऐसा जो मेरे को मालूम है वो तो मैं बताऊंगा, फिर तेरे को सुनना कि नहीं। बट यू कैन ट्राई दिस, वेरी वेरी मजा आएंगे, मतलब दिखेगा भी अच्छा। Eyes up. Cover going out. Revealing area. Crash is ready. Enemy spotted me. My ultimate is ready. One enemy remaining.
Cover going out. Watch them run. You can kill me. Stealing sight. Never back down. चल भाई मैंने देखा है लोग जो लोले रहते हैं बट आई विल ट्राई फॉर श्योर भाई. यस भाई. चल भाई गुड नाइट भाई. बाय बाय. गुड नाइट. Rip and tear. Satchel up. अरे fuck. There. Knife deployed. Grenade. Two suppressed. Grenade out. Multiple targets. Flash. अरे Bomb buddy out. Satchel up. One enemy remaining. My ultimate's ready. अरे ऊपर है बहनचोद. काट इसको. Launching thorns. Thorns are alive. Last round before the switch. Heading to the above. Keep fighting. Rest is overrated. BYB fam. Going to Astral to do them Astral Guardian things I do. That'll work. To live another map, at least Haven this time around, their map is going in their favor, which is very much what we needed from their Don't miss me too much. I'll find Smoke's you. down. Recovering it. Taking that back. Need that back. Hi! I'm pissed. My ult's ready. Enemy spotted B. No more stats. Reloading. Well divided. Joke's over. You're dead. Last player standing. अरे क्या क्या Switching sides. My ballistic setup is a chaos. And if they don't, pues, you can't complain of your head. Vamos. Reloading. Target B. Target B. All missiles away. Drone going out. $30 seconds left. Welcome to my world. Grenade is live. You will not kill my ally. Multiple enemies B. Poison's gone. My ult's ready. Reloading. Reloading. 10 seconds left. My ultimate is ready. This is how it ends. Let's end this. यहाँ से लेके वहाँ तक अल्ट करना चाहिए था. वो भी अच्छा रहता. वो साइट पे ही नहीं आ पाते.
Focusing. Neutralize. Destabilizing. Next. It's one enemy remaining. No distractions. Last player standing. Off your feet! 30 seconds left. I think as well, on that conversation, like, I would like to be more ISO in general. If we see about operator being in meta, I think it's really great comes to that. But I think when we're looking at the KC roster, who do we actually like visualize picking up that agent? Because Aves is... I guess that's it. Stopping fire. Breaking them. Match point. Please stay alive. I hate making new friends. Yep. I think as a map in which we do see Phoenix picked, like Vitality has played it. Many enemies Right, here we go! My ult's ready! Next! Shocking! Ah! ये किधर है? It's you and me. Very similar to the idea being that the tail with Fade is going to be able to set up tail Fade for out. Last player standing. It's you and me. 30 seconds left. Spike planted. प्लांट हो गया था लॉग You not ready for a light show? But yeah, I think looking at that composition, they both have quite interesting and different approaches coming in. So yeah, we're ready to also head into the final match of this series. It is do or die for both these rosters as both KC and Heretics are now on the final map. I'll find you. Right there. Bring them down. Come on, let's go! Bring them down. Someone's in attack expired. Enemy spotted A. Trap triggered. Careful now. I know exactly where you are. Last player standing. I know exactly where you are. I know exactly. Spike planted. Water rising. Placed. Not yet. Browning sight. Sudden death. Forgive me if I overextend. Old habit. No heroics. Follow protocol. Blocking movement. Focusing. My territory! My rules!
120 पैर को पड़ी. Spike planted. My rules. Not today. Ready. Let's serve the die. One enemy remaining. Slow down. Enemy spotted B. Defuse the spike. Reloading. Don't worry, I didn't forget. Drone in sight. Wasn't worried for a second. Don't Defenders win. This team's shaping up into something special. You know that? So confirmation that nobody's made it any deeper. Benji gonna try and shoulder up first though, take the angle, and then yeah, he's done really well on this. Not too phased. Ooh, I was complimentary a little too early, but that's fine. He's all good. He's still alive. Just let him. I'm gonna make it big. Possibly it's pretty quite light to keep that hold on, but to lose anyone else. Yeah, I mean it was well invested at being just the one pistol from Re-Ends. Kept them down to 30 HP. Nothing really for him to do about this. Would just stifle the Bulldog away. Give his life. Trade of point towards the ultimate. 2-0, 4 standing. Clean start here for Heretics. Yeah, I'll be happy with that. Hit the ground underneath them, get a good build started. Start to look at the ults as well. You're going to have Woo pretty close by early on. Benji's doing well, obviously, in this round, getting 2 kills too. I thought he might have been on for the third. I think he did as well. I thought 2 bullets happened. Near enough fight. So, all in all, Heretics, good start. It's not the pistols that worry me, it's everything else. Now we get to see I was it. going to say, yeah, come back here, we've got a weird overlap in terms of this bonus conversion for Heretics. Match found. Big investment towards mid here. Nothing on the other side of it for KC. See, we'll get some sound cues there. Yes, I'm pumped. Sydney Sween. Heretics, I mean, sticking to their guns here. Still 3 semi-committed towards mid, and Benji now repositioned towards A. This is going to be the fight for middle. Rienne's already going to do insane damage taking down Arvez. Levin then just going to try and get involved. Spots out 2 good information relayed here. Rienne's almost on for it. Get away there, but it's I wish KC जीतनी चाहिए. TH डायरेक्ट डिसबैंड हो जाए. ऐसा नहीं डिसबैंड. हक दे बटे. I'm out of here. And it's all gone weird. KC looking a little lost in the sauce, but Dozier trying to do what he does, but can only get one this time. Yep. Benji. Yes. Go, go, go. Grenade! Nice shot. There. Mayuresh, welcome to the live. हट 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 ये क्यों गाई करी मैं
there. Excusez-moi. Back off. Got him. Get out of here. Grenade. Me for me. Satchel out. There. Go get him. Satchel out. Ouch! Ultimate orb spawning. ओके उसका ध्यान था कि इसका टीममेट इधर मारे Satchel out. Watch out! Bye, monsieur. There. Grenade. 10 seconds until stage change. अरे little boo. Satchel out. Missile deployed. Bomb buddy out. No one's catching me on. Satchel out. Hey! I'm out of here. Bad move. हाँ? मेरे को लगा मस्त स्विंग करूँगा रे उस पे Satchel out. Charge your ults. Reloading. Bye-bye. Grenade. This way. Taken out. 10 seconds until stage change. Ha! 4. That's one rampaging raise. Final stage. अरे यार इसने थोड़ा पहले ही पीक ले लिया Bomb buddy out. My ult ready. Here comes the party. Ready. fuck ultra wasted That's 3. 4 down. Hostile down. Grenade. Joke's over! You're dead! इसका ultra waste हो जाएगा इधर ही Charge your ults. nice shot They're dead. अरे Go get him. कैसे One. Got one. Satchel out. Satchel out. Ignition. Get out of my way. Go away. Grenade. This way.
हट ये Gotta go. Reloading. अरे लॉल भाई मैं ही मर रहा हूँ Listen up. Satchel out. Go. The hunt begins. If you want to play, let's play. राइट लेफ्ट लेफ्ट Satchel out. Joke's over. You're dead. ओह इतना मूवमेंट दिया गांडू जैसा Bomb buddy out. Jet's grounded. Get lost. That's 3. Satchel out. ये मैं मर गया लास्ट को बट ये चेंबर भी तो ऑप्शन नहीं मार पाया 9900 से इमेजिन Match found. Man, the fuck RT is doing? RT is can't do it by overconfidence. Yeah, absolutely. And Yes, I pumped. talk about it now a little bit. Kind of alludes to Heritage in general. My GF is pretty. That's good. Good for you, bhai. Good for you. Your GF is pretty. In a comfort role, maybe in a map that could do with something a little bit different. Like, where do you stand on this? I mean, yeah, at face value, it's you want to put somebody who hasn't necessarily landed on the roster. Okay, cool. Let's remove all the noise. Let's put him on the role that he's going to feel most confident on. Again, whether or not we see many examples here in the first half, it's not really as if he needs to do anything here. It's obviously seen him go forwards, but the way Heretics are playing in terms of these mid crunches, certainly if he's buying the op, he's not really going to be the person at the front of the pack there. Maybe get a better answer to that in the second half, but I think, yeah, you remove some of the noise in terms of composition discussion before Heretics to come back. It's the lowest hanging fruit, right? Put him on the jet. Let's clean up some of the other stuff. Yeah, that's fair. And a big switch up here, though, as well, just seeing the round itself, back to Sheraton and that left over side. I do want to see if Fight. beyond just because they were exploiting You benchod nice need. One day. Satchel out. Get out of here. Ultimate orb. Gong buddy out. Satchel out. Got him. Next.
door. Grenade. Satchel out. Oh, good timing. Charge your ults. Ready. Precision kill. Go get him. Grenade. अरे बहनचोद क्या नीड फेंक रहा है? आएगा तो पूरा स्प्रे करेगा। लगा ही ना मेरे को, मैं बोला ना यार। Stage 3. Here comes the party. Satchel up. There. Great for me. Buried. Miles. Fire in the hole. Satchel out. Not ready yet. Joke's over! You're dead! Satchel out. Satchel out. See ya! Squad. There. Reloading. Oh, it's you and me. Grenade. अरे ये क्राउच कर गया यार। Bomb buddy out. There's that. Woo! Satchel out. Grenade. Satchel out. That's three.
अरे किसी और कोई और है। परफेक्ट डिस्ट्रैक्शन है भाई। क्या खेला हो भाई। वो 33 19 बट मेरे 10 ही देते हैं। अरे कितनों को कितने बार 10 बार इसको 10 बार इसको, फिर ये लेफ्ट साइड ज़्यादा गया ही नहीं। नींद आ रही है। गेम बंद, गेम बंद, गेम डायरेक्ट बंद। No way they read this, yeah. They try to trade the op. We drift through. We forget the comeback could be here. Oh, he's been finally allowed some freedom. Let off the leash. Able to have a couple of shots without a whole barrage of util in his face. He has a great time with it. But man, I felt they looked uncomfortable in that post plant then. Yeah, I mean, again, it's a great freeze from KC. Leave Levin kind of inserted then, almost kind of hint at a bit of a fake elsewhere, as Levin's obviously then cast the timing here on Benji and Riens. But after that, then it's maybe a little bit of split focus. Before this, what comebacks on 2 kills, but rightfully so. And you see some of the rounds where they have an op and Zeish maybe reflecting some of those very sentiments. And I think that is a godsend for comeback as well. For confidence alone, finally. And I'm so glad we saw how oppressive it was at the start. For him, he feels nothing at the start of this one, just that smoke in play. But a 3-play push out, or at least a look on the B side, but it's fast through middle, or at least it was an attempt to be fast through middle. See if Doshi is planning on TPing through here. They actually try and trade out, and it's Heretics to come out on top. It feels like it's first time that the Heretics have kind of held that with some security. Clear behind this, Sugetsu. Beautiful catch on the jump peak. I'm just not thinking they could be there that fast after the ult, but caught asleep almost there, hoping for the best, but it is just Woot on this side. The rest aren't nearby yet. Comeback still far off. Benji. Oh. Man. Some of these boys can hit shots fast. What can Benji and Comeback do now? Ah, the divide's gone up as well. This is really tricky. Benji के पास ult है, Benji के पास ult है. Divide is going to make it so hard the second you show. So Benji's got to try and draw the attention, which he does. Can't quite find it. Ult है, यहाँ से ult करता फिर मस्त जाता. All even, 6 apiece again. Mike, we've been here before. Apparently these two want to be playing as late as possible today, and I don't know who's got the upper hand. Do you? No, I don't think so. But we'll be right back with the second half after this. कुछ गाड़ियों की हैंडलिंग बहुत ज़बरदस्त होती है और कुछ गाड़ियों में मिलता है ज़बरदस्त राइड क्वालिटी, लेकिन मोस्ट हाई एंड लग्जरी कार्स में अच्छी राइड क्वालिटी एंड हैंडलिंग दोनों कैसे मिलती है? क्योंकि ये सारी गाड़ियों में आता है हाई एंड सस्पेंशन जो अडेप्टिव है, यानी कि खराब रोड्स में वो अमेजिंग राइड क्वालिटी देते हैं और ऐसे फास्ट टर्न्स पे बढ़िया हैंडलिंग भी मिलती है। अगर आपको ऐसा सस्पेंशन चाहिए तो आपको मिनिमम 80 लाख स्पेंड करने पड़ेंगे इंडिया में, स्टार्टिंग फ्रॉम द BMW M340i। पर एक SUV है जो 30 लाख रुपए के अंदर आती है और अडेप्टिव सस्पेंशन ऑफर करती है। ये है महिंद्रा की नई BE6। ऐसी और वीडियोस देखते रहना है। फॉलो मोटर ऑक्टेन राइडर। ऐसी बर्फ में 4x2 कार्स नहीं बल्कि 4x4 कार्स चलती है। अब कैसे चलती है वो दिखाता हूँ।
अब ये जो है ना नीचे पूरी स्नो है, अब ये तो चलो फ्रेश स्नो है, लेकिन फिर भी इसमें 4x2 कैसा परफॉर्म करती है और 4x4 कैसा परफॉर्म करती है वो देखो। तो ये गाड़ी मैंने डाली ड्राइव में और यहाँ से मैंने 4x2 ही सिलेक्ट कर रखा है फिलहाल, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। 4x2 में अब गाड़ी निकल पाती है फिर नहीं वो देख लो। तो देखो आरपीएम देखो गाड़ी के, बट गाड़ी नहीं निकल पा रही है। अब वहीं पे कुछ लोग बोलेंगे भाई ड्राइवर होना चाहिए ये वो, तो मैं रिवर्स कर रहा हूँ, रिवर्स में भी गाड़ी नहीं हिल रही, फ्रंट में कर रहा हूँ तो भी नहीं हिल रही, ठीक है। अब आपके डाउट के लिए एक ट्रैक्शन कंट्रोल और मैं ऑफ कर लेता हूँ, अब देख लेते हैं, अब भी नहीं निकलेगी, अब सिर्फ टायर ही जो है पीछे स्किड करते रहेंगे, देख सकते हो आप। वहीं पे यदि मैं इस गाड़ी को न्यूट्रल में डाल के और 4x4 हाई में ले आता हूँ, तो 4x4 हाई जैसी आपकी गाड़ी ने डाला तो जो गाड़ी है वो ईजीली बाहर निकल जाएगी। बट स्नो के लिए 4x4 हाई नहीं, ये इधर करके और पहले कर लेता हूँ न्यूट्रल, और ये नीचे की तरफ 4x4 लो जो है काम में आता है। जैसे ही 4x4 लो डालोगे जो गाड़ी है वो और भी ज़्यादा स्मूथली जो है जाएगी, और पावर बहुत ज़्यादा इसमें नहीं मिलती, जिसकी वजह से गाड़ी कंट्रोल में रहती है और इधर उधर गाड़ी नहीं भागती, इजीली जो है गाड़ी निकल जाएगी किसी भी टेरेन से, कुछ इस तरीके से। सो ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है, सो फॉलो कर लो MRD ब्लॉग्स को। Keep that shorty in range as classics. I have a shout. Oh, God. Ooh, he was on the money. It sets up Rien's to at least drop a body, but still, they're just happy to bulldoze, right? They can stay as a pack, fight as 5. Plan's going to come down, and you're looking at what's remaining. Comeback does get a chance to maybe do something, but man, just feels like it's not वापस वहाँ पे even like that silly 1v1. There's just like things like that. एक मिनट make you feel like you can't. मैं पीछे देख रहा हूँ, really वही बोल रहा हूँ, एवन कैसे चालू है, मैं पागल हूँ। Probably the fairest thing we've said all day is to get. Huh? Nah, man, that's why they're winning. Why are they winning? Why are they winning with pistols, Michael? I don't understand anymore. Okay, well, retake time, I guess. Cancel time, maybe save the weapons time. I don't know. What maybe. Do? It's maybe. weird. It's weird. It should now they be a have problem. a judge posted up on the choke point. Brilliant. It's going to be a really awkward trade to find. We've got a haunt, a paranoia, and a couple of smokes. I mean, the paranoia does nothing to Woot here. He's still going to sit on this. He's still a problem. Yeah, he's still a problem. Still got one. Still going to drop bodies. And Heretics given just a new lease of life here. I don't know how they've managed to pull this one off. But Shados going down swinging, but I think he knows he's going down nevertheless. As Boo sends him to his grave, and a thrifty conversion against all odds. I mean, show me that pistol kill again. right click kar diya. He wasn't even fully in the smoke. No, he was. Nah, yeah, he was, yeah. It looked like the shot comes through, like when he's still on the outside of the smoke. I mean, that's just absolutely ridiculous. Foul business. Well, Bro, how we lost this eco again? Yeah, left asking the same question. Right there with you. Oh, where are we now? Okay, Sheriff with Shados. That's a sentence I don't want to say again. Enemy kill. Nice shot. Oh, there he is! A little bit more of that. Again, he's so good at this, like any scoped weapon. He's so good with it. And if he gets that confidence beside him, it's a treat to watch. Now, obviously, this is classics and a Sheriff, but do remember the last round. So, this one probably not going to end the same way. I was going to say, I'm in at the start. You're not stacking here, right? I'm in at the start. Spike planted. Still want to give credit to Comeback. Rian's the one to go forward and hunt here, just 2 points away from his ult. Again, a kill and falling here, we'll give it to him. Unless he finds both, but Sugetsu and Shados not necessarily travelling into his path. Even so, yeah, I mean, it's so weird when round 2 gets flipped like that as well. Yep. In terms of the money.
Shados on the deeper angle, so he gets to shut down now. It's farming That's time. it, yeah. Yep. Woot to find a couple of extra points. मस्त खेल रहा है भाई ये. मेरा कैमरा चेंज कर लो क्या? For Heretics to find 8. Stay down. There's the eco farmer. Yeah, I was going to say, yeah, well, okay, it was real. It looked like it was like the worst ever jump. Nice eco, thanks, man. I know, he was just moving back on If his you don't side. get, you could. We won't get eco'd. Flip it. Why have we said that? Flip it. I'm writing that down. किसी जितनी चाहिए? शेडोज वगैरह अच्छे प्ले है. Locating target. Here we go, straight through middle. They've got weapons this time to come back. What are we up to? Am I missing something there? He just looked like he wanted to die. Okay. This feels bizarre, but the Nightfall finds nothing. Shados then manages to catch one. Push-up finds another. They have slip sight, so he's a bit cautious, trying to spin on the dime, but it is a 3v2. Benji and Woot have sight, but they don't have spike, and they don't have it planted. Also don't know how close some of these players still are. Trying to find something here in terms of KC making their way back towards site, but then Woot and Benji are scratching their heads. And nobody from KC, I mean, rightfully so. Dosia's holding the retreat as well. They can set up a pinch here. Ton of time has passed now, but still plenty left to play with on the clock. Poison's off. Benji, a quick check onto the flank. 30 seconds And left. a big question mark created now by the smoke on top. Maybe anticipating a flood back from heaven. We try and ply it as well, as you can see where they're walking through, but you can see why Benji's looking this way as well. Just not finding bodies yet. Trying to post up towards connector, leaving Woot very alone. Trying to catch a pixel on the cross out, maybe. Ah, he did see one. Nice shot towards Levin, but gonna need more than that. Gonna at least know where Dosia is. And then the last, maybe they can figure it out. But Dosia on the hunt for this, trying to corner them around. Sugetsu's found one, leaving just Woot alive. 2 kills already, got to get the job done. That's how you do it. Sugetsu takes that step and takes the kill. KC tying up the scoreline again. Great freeze once more from KC, showing composure in some of these high pressure situations. Able to win out initially, the push into sight. I thought that came from Link actually. I thought it was somebody following up, yeah. On the left. ये बहुत प्यारा खेल है. Shados looking lethal here in this round for a 3K. The gods are coming. Brandon, positively. Come on, eh? There's nothing to smile about in my life. Same. But that's a Took the words right out of my mouth. That is a man so far gone. Welcome back to UK esports. Weber has been the talisman of that for most of his career. And that, I think, is his perfect phrase. Love it. Now, onto the game we go. 8 apiece, tied up. It is elimination. I can't stress it enough. I know this game has been a bit weird and wonderful. Find you. He's going to be handled, but Levin now has to peel away. Lucky to not get punished. There's no ping there, but I don't know if he actually spotted anything on the retreat. It felt like he should have. Sure. It looked like it to us, but easier to say when we have X-ray. Heretics, no harm, no foul initially. But now stacked up outside 8. No pressure towards mid just yet. And with the pings, I think Woot maybe going to invest his ult towards Link here. Maybe on the confirmation, but Evans got his hands put. Nice. Come on, that second. Outrageous to get that. Does Dosia get cleared with diligence here, or does he get to hold this? Mr. 2K with the judge in hand. And their attention is being split to another side. If they don't clear this correctly, Dosia is on for this. But Boo seems aware there could be someone rather nearby. So he wants to set up the boys from the side. Smoke's going in, on top. He's got to be careful now. There's 2 on this corner. Oh, you couldn't get away with it. How? क्या गांडू है वोडोस ने जरा पास से करने का तो. A mad game apparently. Shados and Sugetsu once again in a scenario like this. Now Sugetsu, it won't be the first time we've seen him in this sort of position either. So let's see if that awareness is in effect. First challenger unawares, Boo punished. Now it's Benji on the case. Alone though, going to be spotted and actually behind the curve on this engagement.
And the site gets taken. That's going to be Shados taking the space. Has a go for it. Drops Benji. And now Woot needs this. Heretics needs this. He's got a little bit of stall here. Sugetsu's got to get a move on. He knows it as well. That's lovely from Woot. Cool and calm and collected. Give it up, yeah. That should be all she wrote on this one. Heretics. What is that double from Levin? And then what is the double from Boo? You tell me. You tell me. That was ridiculous. But this is disgusting to catch a second kill here. But Boo lining this up. I mean, that's one of those where you just like, you look at the kill feed, you're like, huh? There was two? Huh? There was two? I mean, also, how many just key kills came in there? Like, Shados even finding that one was massive. Frustration mounting on the other side. You're amazing, guys. Good job. Aww. Aww. Wholesome moment. You said that about me. Time out for KC, and it's a stressful one. Because by hook or by crook, I mean, look, Heretics, it doesn't feel good to be watching that going, yeah, they'll be good next round. It is fine margins. It's weird picking up 2 kills here and there. It's not comfy, it's not confident yet, it's not settled down, but they're in a far better position now. Financially, they're sitting better. Ults, they're starting to sit better. On the other side, looking a bit rough with the finances. Not quite got so many ults to bank on here, so we're gonna have to see them try and figure this out on the fly. And it kind of comes at a crucial time as well for KC, because Heretics about to be on a fairly stacked ult cycle. So Woot being the only outlier to that. Who else is invested? It's just going to be a couple of pistols around Sugetsu's rifle, but Arvez will throw Guardian in the mix. Again, on the brink of some ultimates, but not quite there. Would have been nice to have in hand for this round, yeah, maybe. And the problem being it might not even come. I mean, Shados, the one outside of that, the buy round to follow this. Have to wait and see. On the other side, Bladestorm, Mental Strike, and re-ends with the Nightfall. Plenty of tools for Heretics to capitalise on this advantage. Luki nahi lu. And anticipating some aggression here. Cover going out. Again, Levin explores down mid, does have his ultimate as well, so he can actually get behind this B side execute from this position. Happy to let this simmer for a second too, right? They're happy to let this sweat a little bit, but I think that's definitely the plan here. Contact comes from the outside of B, and they're set up to capitalise. एक फटाफट से चेकिंग्स करता हूँ दोस्तों. Silent starting to एक एकदम important channel के regarding checkings. What is the goer? Okay, clear towards connector. Now they dismantle the little stack on towards sites again. Copping a boatload of damage, unconfirmed. But now he's kind of tucked in the corner, and it's incredibly hard to even just stand. But Comeback's dead. But it's fine apparently because they've got the site. As Levin, Shados, and Dosia are pretty far off the mark here. Back in though, maybe a chance to get a couple of bodies dropped, not to be. Shados! It's a headshot, but that's not enough. Dosia in a 1v3. NG lower HP, but it's going to be Rien's watching. Maybe watching this fall apart. Let's see what you got, Dosia. Tuck below. Oh, it was a nice try. Yeah, you saw there being a little window of chance there. But for Heretics, it took quite a bit, but I guess they're happy with that. Yeah, really solid setup. Like I said, I think the fact that Heretics are allowed to get so close to the choke point, now again, they don't necessarily want to gamble Levin's ultimate, but the investment here, it makes it so difficult for them to try and act upon that. Again, it's unfortunate that the hinder doesn't really... Thank God for that. Damn. Not going to get E-code. Hall high by. ये क्या नाम है? All good. I mean, if that's the confidence coming from your coaches, the coaches are going through it, both sides. No one's happy. Rien's on the stage desperately saying, guys, you're so good. Let's go. Let's get 10. Okay, here we go. Buy back in place. There. कैसा है तू? मैं एकदम बढ़िया हूँ. Hall high B. तू कैसा है? Levin and Boo divided.
near enough by. And I'm actually seeing a bit of a creep down middle from Arvez, so yeah, going to shift in towards connector side. I think now anticipating they probably figured out that KC have had some freedom towards mid. Is there anything beyond consideration here? Don't miss me too nice. Slow down. This could be really awkward for Levin. How is he still staying alive? He does get found in the end. Heretics do manage to pry these players out of position, but it's the double from Benji that catches me off guard, maybe assuming it was all through middle. There was more bodies behind it. No, there was still that split towards A. To now Shados and Dozier once again behind the curve, having to put this puzzle together. 30 seconds left. Being kept basically standing and breathing by a smoke. Benji waits. No one walking that right now, but they've already repositioned. Got themselves prepared. There's still an element of danger to this, Mike. That paranoia is not bad. It has divided them, but now they can rest for a second. 13 seconds. There ain't much time to rest. But Benji to get him across the line that round. The 2 kills were key then. KC is making slowly mistakes. Creeping closer and closer KC is towards a 12th, and this one feels teed up. Like I said, the ult's going to come in the more awkward of the purchase. Super clean there, but Ken Levin may be leaning a little too heavily into this freedom that he's had in mid. 12 हो गया ना उनका? Didn't even catch the. Yeah, you still got time, bhai. Still, bhai. Figure out karo, bhai. Figure out karo. Got out. Go round G2. As soon as you see him pop the recall, then it's like, whoa. Where to, boss? Okay, Bye still not pretty. KC trying to put it together. I think they know they're on the ropes here. Trying to do what they can. Bulldogs are plenty. Bucky's out to play. Sheriff. This time a little bit more attention early on towards his A side. Heretics got bodies behind this. 5 on the side of the map. Looking for Sugetsu. The Shados. Maybe a little help coming in from Levin. I think Shados has noted this, but they are close. They are very close here. I think they're deeper than expected. Sugetsu might be in for a horrible surprise here. And Comeback does land the knives. And now we go, but what a swing from Levin to try and keep this in touching distance. But a 3v2, Dozier. He's not as much this time. Got away with that TP, nobody even challenging it, but... Caught by the Prowler, so good work from Rienz there to make sure. And catching both, should know both players' positions now. Dozier trying to get a little fast and loose with this one, but has to hold back. 9.5 for the time being. So he's down. That's a bulldog, and that looked on the money. That looked very close. Dozier, 6 bullets to play with, and a fair fight on the first. Can't quite get the second. And he's all alone here. No help coming in yet. He needs some assistance. Arvez trying to gap close here as they're on the hunt. They're not going to have any clue about Arvez's reposition. No. They can maybe make a guess. Oh, but it costs them their life. Now just Woot in the 1v2. Dozier's down low, though. Creeps up close. What a shot. Damn. That was good. Being really hard to pin down. Wow. That is huge work. Damn, that was good. That was good. That was good. Able to get the hell out of dodge. बहुत प्यारा खेले वे ये. Dozier. Starting to see that really individually shine. That's the impressive factor. The sort of thing I'm saying, like a player that can stand on his own 2 feet, right? Certain situations here, just running rings. ये अच्छा मारा इसने smoke out करके. A beautiful disengage here. So well done. Shados looking very happy with that one. Classic PS3. Not out of danger yet if you're Heretics as well. What a throw, what a throw, man. KC back in a decent position. Why are in they terms of the peeking? ults. On the other side, Woot and Benji both have theirs. Actually, peek नहीं करना चाहिए था. This could be nice, or it could on contact. Now, yeah. Okay, oh my God! Oh, wait, it's Sugetsu getting the 3, okay, but then Benji gets 3 back! The site's now his! How have they come out of the coin flip on top? Bro, what? That was a beautiful crunch by KC, but how did Benji get 3 there? I couldn't tell you. I don't even know. Did he hide behind the box or something? Maybe. I'd love to see that back, but now it's 2 fights on 2 fronts, and Heretics are not sitting healthy. Yeah, Boo's 38 HP. Boo's got to win this fight, but it's Dozier on the other side. Does he even think about it? He does! Dozier is so good! And now Benji needs an ace here. Nothing short will do.
He's trying to be smart about it, gonna go for the pit. He's trying, man. He's trying everything he can, every tool in the kit. That's a great idea, but it's not good enough. Dosia outdoes them again. A brilliant plan at the start. उसको लगा ही नहीं शॉट क्योंकि वो ज़्यादा देर तक था ही नहीं अंदर. Show me Benji POV. Run the replay already, हाँ ना. Bro sleeping, Gama what? Why not ult first, हाँ? They saw the crunch. I mean, Sugetsu goes forward and just absolutely farms. वो तो distraction था, इसने 3 इधर ही मार दिया. Benji, पहला दूसरा. Credit to Benji, man, to just go into that, right? You talk about confidence and being involved in this. God damn, he tried. Just an insane round. Oh, you can feel it. Feel the tension. अच्छा खेल रहा. I wish KC should win. KC pulling out all the stops. This has been a masterclass though in the last couple of rounds from Dosia. His clutching capability, his ability to stand on his own 2 feet again. Not even to say as well. I think he was sat on like 5 kills, maybe 3 rounds ago. I can't even remember, but बोला था 2 rounds जीतो, लेकिन literally 2 rounds जीतो. KC need him most. Why pull out a shorty, bro? Explosive rounds, maybe something to spur the entirety of KC. It's okay कि shorty use करो, ये use करो. Certainly reduce the advantage that Heretics had established. Couple of key ultimates invested now. Do still have Woods, but missing potentially Riens and Booze to feel a little more comfortable about this ult cycle. Yeah, it's just scary when you know that 11's likely, right? Just knowing the buy that's coming in, 11 feels likely for KC. Momentum is shifting. They're not out of the woods either. No one is. They are depending on some mad outplays from Sugetsu and then Dosia to clutch up and then, you know, this and that to line up for them. But it's happening. Yeah, they're going to hit the site again. Now Sugetsu going to have his hands full in a solo endeavor. Prowler sent in. Sugetsu tries to stall a little bit. Stun actually catches here. Okay, Boo 1 step closer to ult. Ready to go through the motions. Got to be perfect on this. Let's see what the site execution looks like. What is there left to play with here? Sugetsu trying to stand his ground. Is Arvez to bail him out here, taking down comeback. Now the layering and the spacing. Nice not one. Good enough to not get punished by Arvez holding the line. KC. जो direct घुसने का ही नहीं ऐसा. Bringing it back to 11 apiece. Now, crucial thing being, Boo obviously gets his ultimate out. Get ready to learn Two Chinese. massive tools to clear space, or potentially even isolate a kill 2, 3. अच्छा buy नहीं था. To the U2 on the way in, but Arvez happy to pick up the slack there. Buy नहीं था इनका. But this has got to be what the timeout was for from Heretics, well, right? All I'm saying is look at the buy behind this if Heretics lose. Be right back. 11 on off now, another curveball. Yeah, new look on that. And he wants to stick around. He's holding that line. There was a bit of util thrown his way, but he's not rescinded back. He's still trying to check behind that smoke. Maybe a second chance here. KC will leave him posted for the time being. Heretics creeping back onto the angle. Prowler going to reveal this and reveal that it's an off on the other side. It's a big info for Heretics to act upon here. And you can't really cheat a player over. You can't bring players over yet because you just got contact on A as well. So you're trying to put together that puzzle. Yeah, but the issue being Comeback and Benji don't actually take this space away, so they basically revert back to a blank slate here. Again, look at this deep angle. Yeah, not necessarily a clear decision to make. Mid कोई नहीं आ रहा सभी में. That's 51 seconds. I love that Levin checked behind that. It's a really risky play, but the fact it worked out, marvelous. But credit where it's due. Heretics have been good at this initial scale-up point, and this is where it gets difficult. Where do you stand? You can't. Arvez goes down. Dosia goes down. Come back. We don't need to die to that. But it's Shados in between. Maybe he can hold on to something here. He can't. Dealt with by Benji again, putting up big numbers when it matters. Leaving Levin and Sugetsu in a big disadvantage. Sugetsu has to go nuclear here if he tries to make a play. Plants in. I don't see a world where this happens. When you look at Rien's position with comeback, let alone that, Crossfire shouldn't be able to be dismantled. Don't think they have what it takes here. Taking that back. Sugetsu going to try. This Crossfire should be good, man. It's getting a bit messy, but still Riens can tuck in, leave that space for comeback just in case they commit on the corner. The layers should be here. The time is starting to go. Okay, that's fine. That's fine. Comeback. Gonna add the full stop to the sentence for Heretics to 12. But that was risky. Casey had the read.
Yeah, you can see the issue created by Boo's ultimate here. Even with just utility to complement that, Aves has nowhere to go. Of course, Dosia just trying to get into the thick of it to try and find something. Very, very close affair here on the decider. Yeah. And I must point out, Benji is having a real resurgence of form. In these last couple of rounds, especially in my mind, he's sitting towards the top of the board, but right now, at 12-11, tournament life online, Heretics can close now or it goes OT. Oh my god. Just a pixel either side. But again, big info for Heretics. Identify the operator very early on, and they're well equipped now to make a decision on the other side of the map. And again, it's space to be taken. They need to try and find a way out of this. Sugetsu trying to stay alive. He's being smothered. He still comes out winning. Takes away the first, but falls to the second. Arthur's going to answer back on Boo because the damage was done. A 4v3, and it's not safe yet. They want to get that spike ferried over. Boo has to at least get back sight. Chance not invested just yet. No paranoia, but Shados has a little util left as well. God, they need him alive, but they're taking their time through CT. This gets sketchy. Well, they're trying to get in a position to capitalize, potentially. He's got to go now. He has to invest now. The chance of getting another opportunity might dwindle. Nobody but can get on the angle quick enough. They can't get there quick enough. He was maybe worried they're going to just fall towards it, but now Heretics playing the game right back to him. Levin and Shados just make it Levin, last man alive. The panic earlier, the investment of the old feeling, he had no other option. May have just taken away theirs, as Heretics standing on the verge of making it out of this absolute death run. 11 trying, but the time is going, Mike. This one might be all over. It absolutely is! 13-11. It went as far as this could have gone. Both teams stretched very thin. Benji, a huge deciding map for him. गाई मेल्ट कर दिया रे. चलो बाय बाय, गुड नाइट से ऑल, टेक केयर, मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब शेयर कुछ रहो जिंदगी में. वी विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम. तब तक के लिए दोस्तों, उदय बेटिया.